Hello, good evening and welcome to this class of the Prelims Revision program. We are going to continue with economy. I hope you can see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we'll get started. आज के notes uploaded हैं. Please check first before you comment anything. Okay. So the forms are out. किसने फॉर्म भर लिया? अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्लास यार. प्लीज स्पैम मत करो, रुक जाओ प्लीज. किसने फॉर्म भर लिया है आप में से ऑलरेडी? ठीक है, देखो इस बार का फॉर्म इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, द फॉर्म इज कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव मेड अ वीडियो. देखो जो फॉर्म है इस बार का, बेसिकली दैट फॉर्म, आपको मैं एक दो चीजें बता देता हूं. आई जस्ट राइट हियर ओनली एक्चुअली. 1 सेकेंड. इस बार का जो फॉर्म है, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा डिटेल्स आस्क्ड. ठीक है, तो इस बार का जो फॉर्म है, यू विल सी दैट दैट फॉर्म इज आस्किंग फॉर, एक तो देखो कुछ डाउट्स होते हैं लोगों के विद रिगार्ड्स टू फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट. ये एक तरफ के डाउट्स हो गए. ओके, एंड the other doubts are with regards to this new things that have been added. New things with regards to service preferences कैसे भरनी है, hobbies कैसे भरनी है. There is one new problem with regards to cadre and new problem with regards to socio-economic questionnaire, जिसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोचिंग कभी अटेंड करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन चीजों को लेके डेफिनेटली आपको डाउट्स होंगे, है ना. आई एम श्योर देयर विल बी डाउट्स विद रिगार्ड्स टू दिस, है ना. आप सबको ही होंगे. तो इस सब के लिए एक्चुअली ये सब जनरली कब पूछा जाता था? व्हेन वाज दिस अर्लियर आस्क्ड? ये पूछा जाता था मेंस क्लियर करने के बाद. तो अभी जैसे एज यू नो, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सारथी आईएएस क्लियर्ड मेंस, अबाउट 600 स्टूडेंट क्लियर. तो हमने उन सब के लिए एक सेशन लिया था वेयर वी वर लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई है अबाउट दिस फॉर्म, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट वीडियो इज गेटिंग मर्ज्ड. जो पुराना सेशन था, जो मैंने DAF 2 का सेशन लिया था इस टाइम पे, और जो अभी की नई डिटेल्स हैं, उनको मर्ज करके एक वीडियो बनाई है. और शाम तक अबाउट बाय 7 PM दैट वीडियो विल बी अप. प्लीज वो वीडियो डिटेल में देख लेना बिफोर यू फिल एनीथिंग. उसमें सारे क्वेश्चंस एड्रेस्ड हैं. ये वाले क्वेश्चंस मैं एड्रेस नहीं करूंगा बिकॉज ये आपको, आई एम श्योर आप भी मानोगे कि यूट्यूब पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाती है. एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, सिंस मैंने अपने फॉर्म्स जनरल कैटेगरी से भरे हैं, जहां पर कोई इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट मुझे नहीं भरना पड़ा. तो मुझे पता नहीं है हाउ दिस वर्क्स, है ना. दिस आई नो इन डिटेल. माई इंटरव्यू स्कोर वॉज 195. सो आई नो हाउ दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड. ये चीज कैसे भरनी होती है मुझे पता है. सो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस विल बी इन दैट वीडियो. इसलिए आज की क्लास भी हम थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे. लाइक आई विल ट्राई टू फिनिश बाय 7:15, ताकि आप लोग को वीडियो देख के आज ही अपना फॉर्म भर के ही, मतलब you should sleep today after you have filled the form. You should not sleep before you have filled, or at least you know everything. You should know everything about everything before you fill the form today. ठीक है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वो वीडियो देख लो एंड देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट. एक चीज मैं आपको बस बता देता हूं. आप पहले इसको, जो ये जो चीज है सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या आपने कोचिंग अटेंड की, आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अरे सत्यवीर, बोला तो है हो रही है अपलोड, अभी से कैसे लिंक दे दूं? इट इज गोइंग टू गेट अपलोडेड. आपको 7 बजे तक मेरे यूट्यूब पे दिख जाएगी, है ना. इसमें जो आप जो भी लिखते हो, वट एवर यू राइट हियर, दैट डज नॉट गेट काउंटेड इन योर सिलेक्शन प्रोसेस
व्हाट्सोएवर। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है, जहां पर ये फॉर्म आता है वहां पर भी लिख रखा है। कार्डर आप लोगों ने अभी नहीं भरना, दिस इज नॉट आस्क्ड राइट नाउ, दिस विल बी आस्क्ड आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट। तो ये तो आउट हो गया, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ये दोनों चीजें अभी पूछी हैं। द गुड थिंग इज व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, देयर विल बी एन ऑप्शन टू अपडेट ऑल ऑफ दिस, अपडेट दिस एंड ऑल्सो टू अपडेट दिस। तो आप ये भी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अपडेट करने का मौका मिलेगा। यार आपस में बात मत करो ना, लिसन टू मी। अपेक्षा जो बता रही है वो मत सुनो, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, है ना। द चैट गेट्स रियली डिस्ट्रैक्टिंग यार, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ये जो दो चीजें हैं, दिस यू कैन अपडेट लेटर, दिस ऑल्सो यू कैन अपडेट लेटर। तो अगर आपसे अभी मान लो कोई गलती भी हो गई, ठीक है, कोई गलती हो भी गई अगर, तो भी यू कैन अपडेट इट। स्टिल दैट डज नॉट मीन कि हम अभी ढंग से नहीं भरेंगे, भरना तो हमें ढंग से ही है फिर भी, है ना। वी शुड फिल प्रॉपरली नाउ, so we will fill properly, even right now we will fill as properly as possible। और जो मैंने हमारे ही मेंस के स्टूडेंट्स को मेंस क्लियर करने के बाद जो गाइडेंस दी है, उससे बेटर तो मैं कुछ नहीं बता सकता। सो दैट वीडियो ओनली आई हैव मर्ज्ड एंड यू विल सी दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब बाय 7 PM टुडे। वो वीडियो देख के प्लीज फॉर्म वो वीडियो देखने के बाद भरना, वीडियो आज ही देख लेना। जितना जल्दी भरोगे उतना चांस रहता है कि आपको अपनी चॉइस का सेंटर मिल जाए, ठीक है। दैट्स दी ओनली थिंग। समझ आ गई बात जो मैंने बोली है? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमने जल्दी शुरू करी है क्योंकि मैंने आपको कहा था दैट वी विल स्टार्ट द क्लास टुडे विद सर्टेन क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन और मनी में हमने जितना अभी तक पढ़ा है, इससे रिलेटेड देयर आर 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 20। वो हम पहले करेंगे। फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ने वाले हैं मनी से। अभी हमने ट्रांजैक्टिव डिमांड, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी, मनी सप्लाई, ये पढ़ा था और हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे। फिर हमने इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ पढ़ा था। फ्रॉम हियर टुडे वी आर गोइंग टू रीड नाउ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एज यू नो इज वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी में आज हम क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मनी के बारे में और पढ़ने वाले हैं। राइट, आई विल कीप टुडेज क्लास शॉर्ट सो दैट यू कैन सी दैट वीडियो एंड फिल द फॉर्म। फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब प्लीज रिक्वेस्ट वरुण सर टू टेक ऑल एलएमएस क्लासेस। वरुण सर, just for today he was not available because there is something in his family which I cannot reveal, he should reveal. It's a good thing only, but I should not reveal that. He was not in the office today. For some reason he was out of office. It was impossible for him to take today's class. He will take all the sessions, but today he could not, and we'll tell you soon what the reason was. Anyway, आप भी समझोगे उस रीजन को, ठीक है। You will also understand. It's a very good thing, अच्छी बात है। Anyway, चलिए पहले अब हम क्वेश्चंस करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। सेम फॉर्मेट जैसे हम आज तक करते आए हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क्ड ट्वाइस, सेम क्वेश्चन आस्क्ड ट्वाइस इन 2021 एंड 2013। यू हैव 1 minute, स्टार्ट।
प्लीज ट्रीट दिस लाइक अ टेस्ट, है ना, क्विज नहीं है, ये टेस्ट है, आपके पास स्किप करने का भी ऑप्शन है, गलत होगा तो अपने नेगेटिव मार्क्स काउंट करना। सेकंड क्वेश्चन, सोच के ध्यान से, आपको मैं आज दिखाऊंगा भी कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। बट गुड, मोस्टली यू पीपल आर गिविंग द राइट आंसर, गुड जॉब। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2021 का। लेट्स कम टू 2021 का वन मोर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। चलिए, गुड, मोस्ट पीपल गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 सॉरी। अरे स्किप क्यों कर रहे हो इसको, ये तो क्लास में पढ़ा है हमने, ये तो याद होना चाहिए। चलिए,
क्वेश्चन 6, ध्यान से सोच के करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 में गलती नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7, अगेन इसको ग्राफ बना के करना, खुद से ट्राई मत करना। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच के करना है इसको भी, यूज योर ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन 9, इजी क्वेश्चन है यार, इसको गलत नहीं करना है। थैंक यू प्रणव। चलो क्वेश्चन 10 की बात करते हैं।
रिमेंबर स्किप करने का भी ऑप्शन होगा, और अगर आपका गलत हुआ कुछ, इफ यू गेट समथिंग रॉन्ग, तो आपको अपने नेगेटिव मार्क्स भी लगाने होंगे। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन 11। सुयश, इसको स्किप मत करो, ये पढ़ चुके हैं हम। चलो 12। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो होमवर्क था वो किया या नहीं। आनंद, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे तो कैसे चलेगा यार? सोचो, दोबारा सोचो। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन 13 देखो, ये हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है? दिस वी विल नॉट सॉल्व, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। ये 2019 का क्वेश्चन है, सीडीएस का। इसमें क्या लिखा है? इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यूड टू बी मॉडरेट ड्यूरिंग 2017-18। देयर वाज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फूड इन्फ्लेशन, पर्टिकुलरली पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों दिखाया आपको क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, और आपको पता भी नहीं होगा, ये बहुत पुराना डेटा है। बट क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इस टाइप का डेटा ना यार इकोनॉमिक सर्वे में आता है हर साल। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको भी मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्टली दोनों लाइंस इकोनॉमिक सर्वे से उठाई हुई हैं ऑफ दैट ईयर, ठीक है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे, तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ये बस ये दिखाने के लिए था कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के आते हैं, आपको ये सॉल्व नहीं करना है। 13 क्वेश्चन इग्नोर। देखो, ये भी एक, ये क्वेश्चन भी इग्नोर करना, ये क्वेश्चन भी इग्नोर करना। WPI has increased in India during 2011-12 due to which of the following factors? अब ये भी इकोनॉमिक सर्वे में ही लिखा था। ऑब्वियसली अब ये 2021 2022 का फैक्टर हमें नहीं देखना अभी, ये पुरानी न्यूज हो चुकी है, ठीक है? बट दिस मैटर्स, ठीक है? तो ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे से है। इवन क्वेश्चन 15 वी विल इग्नोर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दैट डेटा। But I just wanted to show you these three questions that UPSC asked from economic survey also, and I will teach you economic survey. You don't have to worry about it. But वो lectures भी आपने देखने। चलो 16 से देखते हैं। अब वापस आ गए हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे। 13, 14, 15 इग्नोर करना, 16 से स्टार्ट करते हैं।
चलो क्वेश्चन 17। अब देखो ये क्वेश्चन 17 दो बार आया, 2021 प्रीलिम्स में भी, 2019 प्रीलिम्स में भी, इवन द ऑप्शंस वर नॉट चेंज्ड। ये क्वेश्चन हमें आज भी समझ आएगा जब हम मनी मल्टीप्लायर देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको अभी नहीं आता तो इट्स ओके, अभी हमने मनी मल्टीप्लायर किया नहीं है, सो इट्स ओके। बट ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, इसका सही गलत में आप पे कोई गलती करने की अभी आपको पूरी आजादी है इस क्वेश्चन में। अभी छोड़ दो इसको, अभी आपको आज समझ आएगा, बट just keep this question in mind that this is an important question. Even if you get this wrong, no problem, we have not studied this yet. This you should not get wrong. 18 you should not get wrong. 18 we have studied yesterday. चलो क्वेश्चन 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यस मैं मैसेज देख पा रहा हूं राजदीप। ओके लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट ऑप्शन है 1, 3 and 4. I will write the last option here. Wait. Option D is 1, 3, 4. अरे option D is 1, 3, 4. Timer will not work. I am keeping the time on my watch. Please. Okay, Astha, I will. Last 20 seconds. चलिए डन। ऑल राइट, बिफोर आई शो यू द आंसर्स, पहले ये बताओ
सबसे इंपॉर्टेंट, डिड यू गेट सम कॉन्फिडेंस? ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस थे, इससे टफ क्वेश्चंस हमें नहीं करने, बट ये क्वेश्चंस देख के क्या आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया? डिड यू रियलाइज जो हम पढ़ रहे हैं वही यूपीएससी पूछता है? हमने अभी तक कुछ भी नहीं रटा है ना? हमने अभी 17 यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना? At least things will become more, sorry about this, at least things should become more evident to you now. At least चीजें और evident होनी चाहिए आपको कि क्या क्या हो रहा है ना? अब आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. These are all the answers. Please ignore the 3 questions we ignored. Don't look at 13, don't look at 14, don't look at 15. 17 don't count because we did not study this yet. तो आप अपना स्कोर 16 इंटू 2, 4 क्वेश्चन हटा दिए मैंने, 16 इंटू 2, मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल इज 32, तो 17 को भी हटा देते हैं. इसमें से आप अपना स्कोर कैलकुलेट करिए, नेगेटिव्स भी लगाइए, जो स्किप किए उनमें 0 दीजिए, जो सही है उसमें +2, +2 फॉर करेक्ट, 0 फॉर स्किप, नेगेटिव -0.66. ठीक है? अरे वाह, 32 वाले बड़े लोग हैं, गुड. वेरी गुड यार. अगर एक्चुअली आप लोगों के अभी तक आप लोगों के एक्चुअली अगर फुल मार्क्स आए हैं और आप सही में आए हैं तो दैट्स ग्रेट. अभी अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं. अरे 34 कैसे आ सकते हैं जब मैक्सिमम 32 है? झूठ मत बोलो यार. अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, नाम नहीं लूंगा मैं. somebody said कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि हम वही पढ़ रहे हैं जो यूपीएससी ने आज तक पूछा है? आपको ऐसा लग रहा है अभी तक देख के? मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने देखना हो ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आप इग्नू के बीए ऑनर्स की इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम में जाना, 6 सेमेस्टर का मटेरियल डाउनलोड करना, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं. ठीक है? एंड आई हैव नाउ एनरोल्ड फॉर एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू. मैं आपको एग्जैक्टली वही पढ़ा रहा हूं जो इग्नू के मटेरियल में आपको मिलेगा, उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं. आपको फिशर इक्वेशन, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी, सब ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा जो बीए ऑनर्स में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है. आई एम एग्जैक्टली टीचिंग यू दैट. ठीक है? ऑब्वियसली अलाइनिंग फ्रॉम यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए. चलो, एनीवे सारे क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन. Which of the following is likely to be most inflationary in its effects? अब inflationary in its effects हमें कैसे पता है इन्फ्लेशन कैसे होती है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड यहां पहुंच जाएगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी. रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट. रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट मींस गवर्नमेंट विल बोरो लेस, सो गवर्नमेंट विल स्पेंड लेस. तो जी कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ नहीं सकती. बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इससे बढ़ सकती है इन्फ्लेशन बिल्कुल. बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इससे भी बढ़ सकती है इन्फ्लेशन. जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. लास्ट ऑप्शन देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट. ये क्वेश्चन आपको अभी आज और समझ आएगा जब हम मनी मल्टीप्लायर डिटेल में देखेंगे. दिस इज द करेक्ट आंसर. जब हम मनी मल्टीप्लायर देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा. बट ऐसे भी अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था मनी सप्लाई इज एम, स्मॉल एम इनटू एम नॉट. जितना भी न्यू मनी हम क्रिएट करेंगे that will get multiplied by some factor and then increase the money supply. When it will increase the money supply, what will happen? From here money supply will get here. This is demand for money. Interest rates will fall. When interest rates will fall, what will happen? C will increase, I will increase, aggregate demand will increase, and this will happen. इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. ऑब्वियस भी है, पढ़ के भी ऑब्वियस लग रहा है, अगर ये पता हो बस तो भी ऑब्वियस है. आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ थिंग्स टाई अप टुगेदर. अब आपको इनमें से किसी चीज में कोई डाउट नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ लॉजिकली पढ़ा है. इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे सारे क्वेश्चंस हैं. आगे देखते हैं क्वेश्चन 2. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
सेम कॉन्सेप्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होती है भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाए, यही होती है। अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस यूपीएससी, ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस टू यू, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिले यूपीएससी में, तो देयर इज वन अप्रोच, स्पेशली व्हेन यू सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड नीचे या तो ऐसे हो वन पेयर ओनली, टू पेयर ओनली, थ्री पेयर ओनली, वैसा हो तो फिर हमें सारे ऑप्शन कंसिडर करने होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन इज अ वेरी गुड वे। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस देखते हैं। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन नॉलेज से करके दिखाता हूं। पहले हम ये ऑप्शन देखते हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। हमने क्या पढ़ा है? इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, कंजम्पशन गोज डाउन, इन्वेस्टमेंट गोज डाउन, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड गोज डाउन। एग्रीगेट डिमांड इधर जाएगी ऐसे, दिस कैन नॉट कॉज इन्फ्लेशन, दैट मींस ऑप्शन 5 इज रॉन्ग। ऑप्शन 5 हटा दो, 5 हटा दो, 5 हटा दो, योर आंसर इज हियर। एक तो ये तरीका है। अब चेक कर लेते हैं expansionary policies. Of course, if you expand the money supply, you increase the money supply, you will cause inflation. ये हम देख चुके हैं। Fiscal stimulus. Fiscal stimulus का मतलब है government spending is increased. Fiscal policy का stimulus. Again, government spending increase की जो बात है ये हम पढ़ेंगे when we read to budget. This is also correct. Inflation indexing of wages. What does this mean? Index means to link to some value. ये भी हमने देखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मेक अ मैथमेटिकल वैल्यू एंड लिंक टू इट। मैं अगर बोलूं कि जो आपकी वेजेस हैं वो इन्फ्लेशन के साथ साथ एडजस्ट होंगी, as inflation increases by 10%, let's say inflation is 10%, you are getting 100 rupees wages today, inflation is 10%, next year you will get 110. अब जल्दी से एक बार कमेंट्स में बता दो कि इससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ चुके हैं क्या, कि इस चीज की वजह से इन्फ्लेशन का इंडेक्स लगाना वेजेस पे, सैलरी पे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं होती। हैव वी रेड सम कॉन्सेप्ट लाइक दिस? ऐसे होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। हैव वी रेड सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस फैक्ट? किसी चीज से क्या ये रुकता है? अरे यस मत बोलो, कॉन्सेप्ट का नाम बताओ। यस बोल रहे हो। फिस्कल ड्रैग एंड ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर्स। प्राइस वेज स्पाइरल को रोकता है क्या? फिस्कल ड्रैग एंड ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अब ऐसे रिवाइज किए जाते हैं पीवाईक्यूज। ऑप्शन देखा, आंसर मुझे पता है, स्टिल आई विल कीप स्टडिंग इट। हायर परचेजिंग पावर, बिल्कुल हायर परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड मूव्स आउट, लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आंसर होगा 1, 2 एंड 4, और एलिमिनेशन से भी यही आंसर आया था, 1, 2 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 3, वेटेज ऑफ सीपीआई, वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन डब्ल्यूपीआई। बिल्कुल सही बात है। सीपीआई में कितनी वेटेज है फूड की? सीपीआई में अराउंड 50% वेटेज है, 45 to 50%। और डब्ल्यूपीआई में कितनी थी? 24%। डब्ल्यूपीआई में तीन चीजें होती थी, मैन्युफैक्चर्ड, प्राइमरी और एनर्जी। सीपीआई में तो फूड एंड बेवरेज सबसे बड़ा कंपोनेंट था, तो ये बात तो सही है। सेकंड, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हिच सीपीआई डज, दिस इज आल्सो करेक्ट। WPI does not measure services, correct? Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on the changing the key policy rates. This is not correct. What did we read? 4 plus minus 2%. This is the target of RBI. Measured how? Measured on CPI combined. So, third is wrong. Answer is A, 1 and 2. With reference to inflation, which of the following statements is correct? पढ़ते हैं statements को। Controlling inflation in India is responsibility of Government of India only? No. Reserve Bank of India has no role in controlling inflation? No. Decreased money circulation helps in controlling inflation? Increased money circulation helps in controlling inflation. अब इनमें से ही कुछ सही होगा, ऑब्वियसली ये दोनों तो गलत है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। I don't need to mug this up.
ये है डिमांड फॉर मनी, दिस इज मनी सप्लाई। इसको पहले डिक्रीज करके देखते हैं। व्हेन आई डिक्रीज द मनी सप्लाई व्हाट हैपेंस? प्राइसेस ऑफ मनी गो अप, मतलब इंटरेस्ट रेट्स गो अप। इंटरेस्ट रेट्स गो अप मींस व्हाट? कंजम्पशन डाउन, इन्वेस्टमेंट डाउन, एग्रीगेट डिमांड डाउन, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड। ये देखा था हमने कल, ये दो ही ग्राफ हैं बस, एक ये वाला, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला। तो यहां पर क्या होगा? डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। फोर आंसर इज सी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 तो देखो वी हैव read in detail also, and this you should remember. Who brings out CPI for industrial workers? लेबर ब्यूरो। अब याद करो जब अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे थे तब भी लेबर ब्यूरो पे क्वेश्चन आया था, राइट? देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन लेबर ब्यूरो इन हु लुक्स एट द डेटा विद रिगार्ड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो लेबर ब्यूरो पे दो बार क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ पी बाई क्यूज। क्वेश्चन 6 देखते हैं, 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। पहले एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, दैट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल गेन और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हमें याद है, ये हमने प्रूव किया था, एग्जाम्पल लिया था मैंने अपना। अब इससे हम डिराइव करते हैं इस आंसर को। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर। डेटर कौन है? हु इज डेटर? पर्सन हु हैज टेकन डेट। आई हैव टेकन डेट। I will be paying real rate of interest. What I will be really paying is the real rate of interest. ठीक है? Now, if inflation is high, if inflation numbers are high, real rate of interest will be lower. So the real payment that I will have to do if I have taken debt is low. This statement is correct. Second है bond holder. Government issues bond. Bond says 100 rupees, 10% rate of interest. You buy this bond. So you are now bond holder. On paper, you are receiving 10%. So your nominal receipt is, nominally you will receive 10%. But what will you really gain? Nominal minus 10% minus whatever is inflation. That is your real gain. जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई उतना आपको नुकसान है। तो इन्फ्लेशन डज नॉट बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, इन्फ्लेशन एक्चुअली मेक्स इट वर्स फॉर द बॉन्ड होल्डर। जितनी इन्फ्लेशन होगी उतना रियल गेन आपका कम होता जाएगा। आप बॉन्ड होल्डर हो। बॉन्ड होल्डर इज नो वन अदर, बॉन्ड इज डेट इंस्ट्रूमेंट। आई होल्ड द बॉन्ड मींस आई हैव गिवन द लोन। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ए। Supply of money remaining same when there is an increase in the demand for money. सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं कहूंगा सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग सेम। दिस वाज डिमांड ऑफ मनी 1, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मनी। दिस इज डिमांड ऑफ मनी 2, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मनी। अब मेरे से पूछा गया है क्या होगा। पहले दिस वाज रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, नाउ दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट R2. There will be increase in the rate of interest, increase in the price of money. Answer is B. Simple. जब मैंने ग्राफ बना रखा है तो मुझे सोचना ही नहीं है। 8. Which of the following goods are included to estimate food inflation in India? अब ये तो मैंने नहीं पढ़ा, I have not read this before. अब देखो, look at this question. In each option, this is a way to look at questions. In each option, there are 3 alternatives. यहां पर 4 है, there are 4 options here, and in each option 3 are written. That means only one of these is wrong, right? Only one of these is wrong. ये बात आपको समझ आ रही होगी. There are 4 options here. Here either 1, 2 and 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4. So one of them is wrong. 3 have to be correct. Which of these is not a food product? Tobacco is not a food product. Tobacco is not a food product. Pan and tobacco and other intoxicants, इसके लिए तो अलग वेटेज था सीपीआई में. So remove option 3, get to the answer which is D for question 8.
sustained decrease in general price level. Now this you had to read by yourself, and I'm assuming you would have read. The answer here is deflation, decrease in general price level. What measures can be used by the government for combating inflation? Okay, let's see. Increase in non-planned expenditure on defense and police. क्या होगा इससे? G will increase. Providing more subsidies on exports. Okay, ये भी हो सकता है. Let's see. I don't know what effect it's going to have. Increasing the rate of interest. Increase rate of interest. What does increasing rate of interest mean? Increasing rate of interest means this was money supply. Now I have reduced the money supply and caused an increase in the rate of interest. Increasing rate of interest से क्या होगा? Consumption down, investment down. Consumption, investment down होगी. Aggregate demand will come down. Inflation will be controlled. Then answer is C. Which one of the following situations can lead to inflation? Again, aggregate demand और aggregate supply पे बोला है इन्होंने. Aggregate demand, aggregate supply. Look at the first option. Rapid growth of aggregate demand outweighing supply. That means aggregate demand grows much faster than aggregate supply. So rapid growth of aggregate demand. क्या हो गया है? Demand pull inflation. Rapid growth of aggregate demand. पहले price level यहाँ था PL1, अब price level यहाँ है PL2. Price levels have increased. So 11 answer is A. 12. Situation in an economy which is growing slowly along with rapid inflation. अब ये चीज है, ये हम आज भी देखने वाले हैं आज की क्लास में, but again this is something that you should have read by yourself. ये नोट्स में हमारे लिखा हुआ है, आप जाओगे तो. Growing slowly means economy has stagnated and there is rapid inflation. So stagnation plus inflation. आज भी देखेंगे इसको डिटेल में. सिचुएशन नोन एज स्टैगफ्लेशन. आंसर इज सी. नोट्स में भी लिखा हुआ है, आज भी देखेंगे. 12 आंसर इज सी. 13, 14, 15 वी वर इग्नोरिंग. ये देख लेते हैं ना. 16 देखते हैं. करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर. आपको समझाया था लीगल टेंडर मीनिंग. एवरीवन has to accept this by law. Money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. B. Simple meaning of legal tender is asked. Money multiplier in an economy, ये हम आज देखेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं. By the end of today's class, you will understand the meaning of this question. आपको I know आपको C और D में डाउट होगा. आज आपको हम CRR, SLR सब आज ही देखने वाले हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा. Question 18. If you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply. Let's say हम M1 measure कर रहे हैं, किस कैसे भी कर लो यही आंसर आएगा. Let's say हम M1 measure करने हैं. M1 is CC plus DD, currency in circulation plus demand deposits. आपने demand deposit से -1 लाख कर दिया और currency in circulation में +1 लाख कर दिया. तो ये टर्म 1 लाख से कम हो गई, ये टर्म 1 लाख से इंक्रीज हो गई. Was there any change in M1? No. So it leaves it unchanged. अब आप कह सकते हो कि हाँ बाद में मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा, कम होगा. बैंक में पैसा रहता तो ज्यादा मनी मल्टीप्लिकेशन होती है, और हम ये आज ही देखने वाले हैं. बट उसके लिए यूपीएससी वेरी ब्यूटिफुली ensured that this word immediate effect was mentioned here, है ना, ताकि आप आगे की चीजें ना सोचो. आगे देखते हैं. नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी. इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, यस. स्टोर ऑफ वैल्यू, यस. यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ वेल्थ. दिस पेन इज वर्थ 10 यूनिट्स ऑफ 1 रुपी. याद है किया था हमने, यूनिट ऑफ 1 रुपी. दिस पेन इज वर्थ 10 रुपीज और 10 यूनिट्स ऑफ 1 रुपी. दिस कोट इज वर्थ 500 रुपीज और 500 यूनिट्स ऑफ 1 रुपी. ये तो है. Is it used for regulating consumption? No. Answer is D. For anything to be recognized as money, it needs to have which of the following characteristics? Intermediate, yes.
Standard unit for quoting process, unit of account, yes. Easily divisible, yes. Higher value in alternate uses. क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मैं पेन खरीदने के लिए जाऊं तो 10 रुपीज की वैल्यू 10 रुपीज, अगर मैं कोट खरीदने के लिए जाऊं तो 10 रुपीज की वैल्यू 15 रुपीज। ऑल्टरनेटिव यूजेस में वैल्यू शुड इंक्रीज। ऐसा कुछ होता है क्या मनी में? नहीं। सो आंसर इज 1, 2 and 3 ओनली, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? इजी थे ना क्वेश्चंस? कुछ ऐसा कुछ रटना तो नहीं पड़ा? आज क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट वाली कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो। अब अब मैं आपको आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी, आई नो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये इंटरेस्ट रेट यार कौन सा इंटरेस्ट रेट है? ये सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट है, ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है, ये जो बैंक लोन देता है उसका इंटरेस्ट रेट है, या जो बैंक आरबीआई से बोरो करता है उसका इंटरेस्ट रेट है, या बैंक आरबीआई को पैसे देता है जो वो इंटरेस्ट रिसीव करता है उसका इंटरेस्ट रेट है? ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है? ये भी आपको क्लियर हो जाएगा आज। ये सारे हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स बट दे मूव टुगेदर। आप ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, यहां से भी लिंक हुआ है उसका। ये हम आज यही चीज हम आज देखने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो टुडे वी आर नाउ गोइंग टू कंटिन्यू विद मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको अब देता हूं 54 मिनट्स हो गए हैं क्लास स्टार्ट किए हुए। आई विल गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक। आपने क्वेश्चंस किए हैं, नोट्स अपलोडेड हैं, अब आपके पास 5 मिनट्स हैं। आप नोट्स को डाउनलोड कर लो इन योर फोन और व्हाटएवर। नोट्स वैसे पहले से ही अपलोडेड थे बट वी हैड टू स्टार्ट विद दिस, इसलिए हमने क्लास भी जल्दी स्टार्ट की थी। ठीक है, अब हम पहले तो कल के ही नोट से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कल बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई देखा था, एसेट लायबिलिटी ऑफ आरबीआई देखा था, ट्रस्ट इन आरबीआई देखा था, सीनियरेज एंड कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क का मतलब देखा था, और प्राइमरी डीलर्स देखा था। अब हम यहां से मनी मल्टीप्लायर, यहां तक हमने कल देख लिया था, बिमल जलान कमेटी का कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। यहीं से कंटिन्यू करेंगे अब, एंड वी विल नाउ लुक एट, अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी, एसएलआर, सीआरआर, सीडीआर, आरडीआर, सारी कंफ्यूजिंग टर्म, सारे इंटरेस्ट रेट हम आज देखने वाले हैं। पहले आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन प्लीज रिफ्रेश योर सेल्फ इन दिस ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पे क्वेश्चन आए हैं और फेयरली कंसेप्चुअल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि आप ढंग से समझो, तो प्लीज रिफ्रेश योर सेल्फ इन दीज 5 मिनट्स एंड वी विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स।
चलिए, let's now read from where we left off yesterday. चलिए, हमने कल क्या देखा था? That when RBI has to introduce new money into the economy, simply printing money is not enough. Print करना sufficient नहीं है. RBI also has to do what? RBI has to introduce this money into the circular flow model. For this, RBI will have to buy certain asset. Then this money gets introduced into the economy. Who RBI buys these assets from are known as primary dealers. ये भी हमने देखा था कल. यहीं से कंटिन्यू करते हैं. अब M1 जो हमारा वन मेजर ऑफ मनी सप्लाई था, M1, उसे हमने काउंट किया था करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. इस डिमांड डिपॉजिट्स को ढंग से देखते हैं. These demand deposits have not been created as an RBI by RBI. RBI ने क्रिएट नहीं करी है हमारी डिमांड डिपॉजिट्स. RBI ने सिर्फ मनी क्रिएट किया है. अब ये कैसे ये डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होती हैं और कैसे मनी मल्टीप्लाई होता है इकोनॉमी में, हाउ इज द मनी मल्टीप्लाइड इन द इकोनॉमी, दिस इज व्हाट वी विल सी. These demand deposits can be used as cash, but it is not cash itself. They can be used. जैसे हमारे डिमांड डिपॉजिट में अगर कोई पैसा पड़ा है, we can use it as cash, but it is not cash. This is not created by RBI. This is created by banking system. Okay, this is what we will see. इस लाइन को अभी के लिए इग्नोर करना. We will come back into this. We will come back to this. ठीक है? So let's say RBI decides that they want to introduce 1000 more rupees into the economy. So this and 1000 is M0. This is what RBI prints, M0. Now RBI will take this 1000 rupees to a primary dealer. Primary dealer will give to RBI some assets. Primary dealer is part of other firms in the circular flow model. ठीक है, यही है, ये हमने कल देखा था. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. अब एक प्राइमरी डीलर, आप मान लो मैं प्राइमरी डीलर हूं, आरबीआई ने मेरे से ये खरीद लिया पेन. मान लो दिस पेन इज मेड ऑफ गोल्ड. मैंने ये गोल्ड आरबीआई को दे दिया, आरबीआई ने मुझे 1000 रुपीज दे दिए. अब देखते हैं इस 1000 रुपीज का क्या होता है. व्हेन आई गेट 1000 रुपीज, आरबीआई हैज गिवन मी दिस 1000 रुपीज. आई विल कीप सम ऑफ दिस मनी एज कैश. Some of this money I will deposit in bank. Some of the money I will keep as cash. Let's say I decide to keep 200 rupees as cash. Rest I deposit in my bank in my savings account. This is the first ratio that we have to study, called currency deposit ratio or cash deposit ratio, CDR. So primary dealer puts some in bank and keeps some as cash. यहां पर एक आता है रेशियो कॉल्ड CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, अमाउंट ऑफ कैश डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. अब हाउ मच मनी आई डिसाइड टू कीप एज कैश एंड हाउ मच मनी आई डिपॉजिट, दिस डिपेंड्स ऑन माई बिहेवियर. दिस इज अ बिहेवियरल कंपोनेंट. ये मेरे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है. अगर हम इसको इकोनॉमी लेवल पे कंसिडर करें, मतलब ये तो सिर्फ मेरा एग्जांपल है, ऐसे कोई भी मनी रिसीव करेगा. दिस इज जस्ट फॉर मी. आई एम द प्राइमरी डीलर. आई विल पास ऑन दिस मनी टू समवन. आई विल देन पास दिस कैश ऑन टू समवन. हाउ मच ऑफ दैट कैश दे कीप एज कैश एंड हाउ मच दे डिपॉजिट, दिस डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर. सो दिस इज दिस करेंसी डिपॉजिट रेशियो which is measured by cash by deposits. This is a behavioral parameter. How people in the economy behave, that determines the currency deposit ratio. ठीक है, अब किन किन फैक्टर्स पे ये बिहेवियर मैटर करेगा देखते हैं. This behavior depends on the nature of the economy. One thing here is, let's say there is the festive season. अभी दिवाली आ गई है, let's say अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर नवंबर का टाइम है, तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, तो आई विल डिसाइड टू कीप मोर मनी एज कैश. अभी के लिए आप मान जाओ कि यूपीआई एग्जिस्ट नहीं करता. यूपीआई हैज चेंज्ड ऑल ऑफ इट. यूपीआई को हम यहां फैक्टर करेंगे, बट अभी अगर यूपीआई एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मुझे अब दिवाली के टाइम पे आई हैव रिसीव्ड 1000 रुपीज एंड यूपीआई डज नॉट एग्जिस्ट, at the time of Diwali I will feel I will buy a lot of things. This is that season
where I will buy a lot of things, so I will keep more money as cash, less money in deposit, right? If it is lean season is when we are not having that many transactions, then I will feel okay, I can keep more money as in deposits and less money as cash. So the season and the nature of the economy controls this factor. Second is state of technology. Today everyone can do transactions using UPI. So I now don't carry a lot of cash. Whenever I go somewhere, I know that I can use my phone to do all the transactions I need. So I carry a very minimal amount of cash. Some of you might not be carrying any cash whatsoever. So technology, which is UPI, also controls this. Then individual behavior also controls this. Individual behavior also controls this. Nature of economy also matters. Is it a cash-based economy or is it a digital payment-based economy? Is it a check-based payment economy? There are some economies in the world where cash is not seen as the primary means. People don't accept cash easily. They will accept checks. Some economies, like let's say Indian economy some time ago, was hugely dependent on cash. There was a huge black component in the economy also. So nature of economy also matters. One other factor that also matters here is what is the आगे लिखा हुआ है, what is the interest rate that I get on savings. If I get a lot of interest rate on savings account, let's say I'm getting 100% interest on savings account, whatever I keep in savings account will double next year. I will want to keep more in deposits. This RBI can control, but other factors RBI cannot control. So broadly, we will say that CDR, currency deposit ratio, what do people generally, whatever money they receive, how much of it they keep as cash and how much of it they keep as deposits, this is a behavioral parameter that RBI cannot control. It is called an autonomous variable, autonomous factor. Depending on the nature of the economy and various other factors like we have seen, RBI can control small component of it, maybe through interest rates, but not all of it. So it is autonomous, considered autonomous to RBI, depends on behavior of individuals. And we assume, because we are studying at an economy level, we will assume that it is constant for the entire economy, just for the purpose of our study. It will not be constant for the entire economy, but we assume that so that we can study this easily. This is the first factor or the first ratio. मैं यहाँ पे सारे लिखते जाता हूँ on slide number 5. Currency deposit ratio. Factor is behavioral. So it depends on behavior and nature of economy, etc., etc. ठीक है? So I was the primary dealer. Let's say I am person 1, primary dealer. I got 1,000 rupees. This 1,000 rupees, I decided I will keep 200 as cash and 800 rupees I will deposit in my bank. In my savings account. Now, what is the purpose of banks? What do banks do? Bank's purpose is to loan this money out. Bank is going to give certain loan out of this money. How else will the bank function? Bank will take certain money from me. Bank is going to pay me certain savings account interest. Savings interest. Then bank is going to loan out this money. On this loan, bank is going to charge some interest. Or let's say call this loan interest. Second question is, how much of this money can now bank loan out? Bank has 800 rupees with itself now. How much can bank loan out? Can bank loan out 800? Can bank loan out 700? This matters. So RBI will tell the bank, let's say, let's go to an even more fundamental level. Let's say bank decides to loan out complete 800 rupees. Now what will happen? Bank has loaned out 800 rupees. When I go back to bank and say, this is a demand deposit, savings account is available on demand. I go to the bank and I say, I need 200 rupees right now. I have spent my 200 cash, I need 200 more. Bank will not have any money. Bank will say, we have given loan. Then I will say that I have lost my trust in the banking system. I had deposited 800 rupees. I come back 2 days later, tell the bank, give me 20 rupees, let's say. Bank says, we don't have it, we have loaned all of it out. I will lose my trust in the banking system. I will now no longer keep my money in banks. Whose job is it
to ensure that trust remains in the banking system. This is RBI's job. So RBI will tell the bank that you cannot loan out all of this money. You cannot loan out 800 out of 800. You must keep some of the money that you have received as deposits. Some of this you must keep as reserves. Because of these reserves, let's say RBI tells the bank that you must keep reserves of 10%. So bank will keep out of 800, 80 rupees as reserve and loan out 720. Now if I go to the bank and ask for 20 rupees, bank can give me 20 rupees. Why is this reserve being kept? This reserve is being kept to ensure trust. So who will dictate how much reserve must be kept? Who will decide? कौन बताएगा कितना reserve रखना है? RBI's job is to ensure trust. So RBI will decide how much reserves have to be kept. This is the second ratio that we have to understand. From the bank's perspective, they have gotten deposit of rupees 800. Bank in this case has gotten deposit of rupees 800. RBI has said you must keep reserves of rupees 80. This ratio is called reserve deposit ratio. Reserve kept by bank upon deposits received by bank. In this case, it is 80 by 800 or 10%. RDR, is it a behavioral parameter? No. RDR is controlled by RBI. RBI decides what reserve deposit ratio is going to be because RDR determines the trust that we have in the economy. So second ratio that we have understood now is reserve deposit ratio, RDR, decided by RBI because it ensures trust in the economy. Okay? Let's see what happens now. Let's continue the process. RBI says to bank, keep 10% as reserve. So look at the bank now. Bank receives rupees 800, keeps 10%, 80 as reserve. Now bank loans out 720. Bank will loan out rupees 720. This loan is taken by some other person. Let's call them person 2. What will person 2 do with this loan? Maybe he has taken loan to invest in his company. Maybe he has taken loan to buy some more assets for himself. Let's say he has taken this loan to buy a new digital board. So he will purchase new digital board for his company. So he will pay 720 rupees, let's say, to the third person who is person 3. And he will now give back, or he will give 720 rupees. He will receive one digital board. Okay. अब person 3 को देखते हैं. Let's look at person 3 now. What does person 3 do? Person 3 has now received 720 rupees. He will also decide that he wants to keep certain money as cash and certain money as deposits. He will deposit this into, let's say, bank number 2. This bank number 2, out of this deposit, will make certain reserve and loan out the rest. This process will keep continuing. Is the process clear? Is the process clear? कि क्या हो रहा है? ठीक है. Let's assume that this person P3 decides to keep rupees 100 as cash and keep 620 rupees as deposit. And let's stop this process here for a minute. Person 3 decides to keep 100 rupees as cash and 620 rupees as deposit. At this point, now, what is the M1 in the economy? ये आपने मुझे बताना है. अभी M1 की वैल्यू क्या है? What is the value of M1 in the economy at this moment? I received 1000 rupees. I have kept 200 as cash. 200 is in my hands in cash. 800 I have given to bank. So my savings account has 800 rupees. मेरे savings account पे फोन पे क्या दिखेगा? 800 रुपए.
Bank loans out 720, gives to P2, P2 gives to P3. P3 decides to keep 100 rupees as cash, keep 620 as in his savings account. What is the value of M1 in the economy right now? ध्यान से सोचो यार. You have to count all the currency in circulation. You must count the entire currency in circulation. Count for P1 first, then count for P2, then count for P3. देखते हैं. There are 3 people in the economy, P1, P2 and P3. Let's see. For P1, what is the currency held? 200. So currency held is 200. What is the deposit? P1 के पास तो है ना 800 रुपीज की डिपॉजिट. उसके सेविंग्स अकाउंट में दिखने को तो 800 रुपीज है ना. यू कैन सी 800 रुपीज इन हिज अकाउंट, राइट? सो 200 plus 800, this is for P1. Let's see for P2. P2 received to 720, he spent 720. Right now, what does he have as cash? Nothing. What does he have as deposits? Nothing. So he also, right now P2 के लिए these values are 0, so I will write plus 0. For P3, let's see. P3 has 100 rupees as cash. So plus 100 rupees, this is cash. He has 620 rupees as deposits. So now this is total value of M1. Total value of M1 in this case is 200 plus 800 plus 720. Or I can write it is 1000 plus 720. ठीक है. अब देखो, how much money did RBI print originally? RBI printed 1000 rupees. What is the money circulating right now? 1720. This 720 is extra. This extra 720 rupees, this is now circulating in the economy. Extra 720 rupees that is circulating in the economy. Yes. Why has this extra 720 rupees come? It has come only because of this banking and reserve system or fractional reserve system, some fraction of the money that they kept as reserve and banking habit. So this extra rupees, this is what multiplication of money has happened in the economy. RBI printed 1000, but total money in the economy is 1720. So if I now write money supply is equal to M into M naught. Money supply measured as M1 in the economy right now is 1720 is equal to M into what did RBI originally make? 1000. So money multiplier in this case is 1.7 or 1.72. है ना, तभी 1720 आएगा. Why did this money multiplier arise? This arises because of people putting their money in banks. So because of certain currency deposit ratio, and it arises due to reserve deposit ratio. Banks creating certain reserve and lending out the rest. Is meaning of money multiplier clear? अब समझ आए मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है इकोनॉमी में? Because of banks. अरे नो कैसे यार? How else do I explain this? देखो मनी कितना सब प्रज्ञा. How much money is in the economy? You put 800 rupees in your savings account. बैंक उसको कितना भी आगे लोन करे, क्या आपके 800 रुपीज चले जाएंगे क्या? You will always have 800 rupees, right? आपके बैंक बैलेंस में अगर 800 rupees लिखे हैं, बैंक might be loaning that money forward, but you have access to that 800. You have access to this 200 cash also. Bank loaned forward, gave to P2, P2 spent, gave to P3. P3 now kept 100 as cash, 620 as deposit. How much money does P3 have? 100 cash, 620 deposit. So P3 has 720 and you have 200 plus 800.
So money in this economy right now, money is measured as M1, M2, M3, M4. I am measuring M1. For U, value of M1 is 200 plus 800. For P3, value of M1 is 100 plus 620. M1 of the economy is 1720. RBI originally only created 1000, but economy has M1 of 1720. That means some multiplication process has happened here. Why did this multiplication process happen? Because you kept money in bank and there was some reserve kept. So money supply measured as M1 in the economy is 1720. M0 that RBI printed is 1000, and money multiplier, some multiplication process happened because of this banking system, that is 1.72. That is how we reached to 1720. This formula we have studied. This was dependent on two things: how much money you keep in the bank and how much bank keeps as reserve. इसका रिलेशनशिप अभी देखते हैं. अब क्लियर है? ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो इट्स नॉट सच अ बिग डील. Somebody is asking 80 रुपीज का क्या होगा? M1 का फॉर्मूला क्या है? कैश प्लस डिपॉजिट, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट. Is this 80 rupees currency in circulation? No. Is this 80 rupees deposit? No. ये अलग से नहीं आया है, ये तो इसी का पार्ट है ना. आपकी ही डिपॉजिट को 80 उन्होंने रख लिया और 720 आगे दे दिया. बैंक में कितना पैसा है उससे नहीं फर्क पड़ता. करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स. योर डिपॉजिट्स इन द बैंक एंड द करेंसी यू होल्ड, है ना. आई होप दिस इज क्लियर. ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है यार, इसके आगे फिर आज का कुछ समझ नहीं आएगा अगर ये क्लियर नहीं होगा तो. एंड आई एम श्योर यू हैव रेड दिस बिफोर आल्सो यार. मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जो पढ़ रखी होगी आई एम श्योर पहले. चलो, मोस्ट पीपल आर सेइंग क्लियर, सो आई विल जस्ट से इट्स क्लियर. P2 को कोई पूछ रहा था. P2 के पास जब उसने अपने सारे 720 रुपीज दे दिए, P2 के पास कोई कैश है नहीं, कोई डिपॉजिट्स है नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 है. यहां P2 की 0 लिखी है वैल्यू. एनीवे, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब दो चीजें थी यहां पे. वन वाज करेंसी डिपॉजिट रेशियो, वन वाज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. अब आपको सोचना है, थिंक योरसेल्फ, इफ currency deposit ratio would have increased, if currency deposit ratio would have increased, what is currency deposit ratio? Currency by deposits, cash by deposits. How much you keep as cash, how much you keep as deposits. Here currency deposit ratio was 200 divided by 800. 200 I kept as cash, 800 I kept as deposits, so it was basically 25% or 1 by 4. If currency deposit ratio had become 50%, मान लो currency deposit ratio 50% हो जाए, what is the cash I will hold now? I will hold 500 as cash, 500 as deposits. So this is what the bank will get. Now how much money gets created? Bank will get 500 rupees as deposits. Bank will keep 10% as reserve, so 50 as reserve. Bank will now give 450 as loan. 450 will come to P2. P2 will give this to P3. Let's say P3 now keeps half of this as cash, half of this as deposits. Now has the money in the economy increased or decreased? Has the money in the economy now increased or decreased? CDR increased, money in the economy increased or decreased? Calculate करो अब खुद ही, बताओ अब कितनी है money supply? What is the money supply in the economy now? It has decreased, obviously. Now if you measure the money supply will come out to 1450. M1 will now come out to 1450. Calculate भी कर सकते हो आप आराम से. So money supply has decreased, है ना. पहली चीज याद रखना, if currency deposit ratio increase, money supply decreased.
This is what we have read. So I can write CDR increase, money supply decrease. Same, let's come from this case. This is our normal case. इस केस में let's say RBI said to bank, अभी RBI ने बोला था that 10% was your reserve deposit ratio. RBI says to bank, no, your reserve deposit ratio is not 10%, it must be 50%. तो देख लेते हैं क्या होगा. I got 1000 rupees from RBI. I kept 200 as cash, 800 as deposits. 800 was given to bank. Bank now has to keep 400 as reserve, 50% as reserve, and loan out 400 further. 400 will go to P2. P2 will spend, give to P3. P3 will keep, let's say, 100 as cash, keep 300 as deposits. अब reserve deposit ratio increase करने से money supply has increased or decreased? अब कितनी होगी M1? अब सोचो. Good. Again, money supply has decreased. So money supply again has decreased in the economy. तो क्या कहूंगा मैं? Reserve deposit ratio increase, money supply decreased. So I can write this as here also, reserve deposit ratio increased, money supply decreased. Yes? ठीक है जी. यहां पर यही बात लिखी है. This thing is proven here and these things are shown. So we have now come to this point that money supply is inversely proportional to CDR. Money supply is inversely proportional to RDR. है ना? ये चीज तो अब हमें क्लियर है. This is clear. What is money supply? Money supply is equal to M into M naught. M naught was constant. This is constant at 1000. What is the factor that is changing? What is the factor that is changing? M is the factor that is changing. Money multiplier is the factor that is changing. So if I divide money supply here and I write it as M into M naught, I write it as M into M naught is proportional to this. This is a constant factor. I write money supply as M into M naught. This is a constant factor. This is not changing. So I can write that money multiplier is inversely proportional to RDR, is inversely proportional to CDR. Is this also clear? Simple है. मैंने money supply को M into M naught करके लिख दिया. Small m was the factor that was changing ना. M naught तो constant ही था 1000 पे. Is this clear? Someone is saying extra 2AB from RBI and banks. Currency in circulation, Ritika, is the cash held in these cases. Currency in circulation here that we are calculating is cash held. मैंने जैसे यहाँ पर in this case I kept 200 rupees in cash. This is counted as currency in circulation. Rest I have deposited ना. तो यहाँ पर currency in circulation is cash held. Second, यहाँ पर भी कुछ cash held है, cash held. So this figure I have put here and this figure I have put here in the calculation. Someone is saying extra 2AB is coming from banks. Gen Z को पढ़ा के memes के language में मुझे पढ़ाना पड़ेगा. But ठीक है, I can do that also. I also enjoy watching a lot of memes. Anyway, तो अब मैं कह सकता हूं that money multiplier is inversely proportional to reserve deposit ratio. Money multiplier is inversely proportional to cash deposit ratio और currency deposit ratio. है ना? ठीक है. अब एक बार दोबारा देखो ये क्वेश्चन. Let's look at question 17 again. You have 1 minute. Now you try to solve this question. अब कोई डाउट ही नहीं आएगा क्योंकि हमने रटा नहीं है ना कि लोग ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो पॉपुलेशन का इफेक्ट होगा. नाउ इट शुड बी क्लियर एंड एवरी वर्ड विल बी क्लियर. करो इसको सॉल्व और लॉजिक से करना. आपको आता हो पहले से वो अलग बात है.
जो हमने अभी रिलेशनशिप निकाला है उससे करना, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। अभी आएंगे ना, सीआरआर एसएलआर पे आएंगे, अभी तो आरडीआर पढ़ा है हमने, बस तरीके से पढ़ेंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। अरे सीआरआर आरडीआर पे आएंगे, थोड़ा तो सब्र शांति। कई लोग पूछ रहे हैं कि सीआरआर और आरडीआर हैं सेम है क्या, तो मीम लैंग्वेज में जवाब देता हूं आपको, रुको जरा, सब्र करो, अभी देखेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। लेट्स लुक एट दिस। देखो, एक है कि जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको पता है, तो अलग बात है। मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीडीआर, है ना। व्हाट इज सीडीआर? CDR, I told you, was a behavioral framework. Behavior यानी कि your habit, है ना। CDR is equal to money kept as cash by money kept as deposits. For money multiplier to increase, for this figure to increase, currency deposit ratio has to decrease. Currency deposit ratio decreasing means this figure has to decrease. Cash by deposits has to decrease. That means this number has to become larger, this number has to become smaller. Fraction का लॉ है, अगर C by D as a fraction इसको छोटा होना है, this number has to become smaller, then denominator has to increase. ये भी क्लियर होगा। So people will keep more money as deposits. People keep more money as deposits, right? If people keep more money as deposits, as a habit, people keep more money as deposits, this value will increase, denominator will increase. So C by D, currency deposit ratio as a whole will decline. Currency deposit ratio will decline, money multiplier will increase. That is why it says increase in banking habit. ये पढ़ के आप बता सकते हो कि बैंक में लोग पैसे ज्यादा रखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस ही है ना। बट व्हाई इज द वर्ड हैबिट हियर? बिकॉज दिस इज सीन एज अ बिहेवियरल पैरामीटर, एंड वहां से ये आंसर आता है। अभी हमने सीआरआर एसएलआर पढ़ा नहीं है ना। सीआरआर एसएलआर आर बोथ पार्ट ऑफ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, वी विल जस्ट सी दैट। बट ये बात समझ आई? आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस टू यू, क्योंकि एक तो अब इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब यहां पर हैबिट क्यों लिखा है, आप समझ आ रहा है? रटना नहीं पड़ेगा। यू हैव ड्रिवन दिस लिंकेज ना, आपने डिराइव की है ये लिंकेज। चलो, अब हमने क्या, ये दोनों रिलेशनशिप हमने निकाल लिए। मनी मल्टीप्लाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश डिपॉजिट रेशियो। अब जो हम प्रोसेस यहां पर देख रहे थे, ऐसी ही हमने प्रोसेस देखी थी। बैंक वुड लेंड ₹720 to P2. P2 would spend it, P3 will get it. P3 will keep this in bank, some money in deposit, some as cash. This 576 rupees that P3 keeps in deposit, this will also go into bank. It will lend, it will keep some as reserve, it will lend some of it out. Now P4 will get 516 rupees. Can you see that in this process, P1 started with 1000, he gave 800 to bank. From 800, now what happened? 880 was kept as reserve, 720 came. 720 में से भी some was kept as cash, 576 went to bank. Bank kept 57 as reserve and loaned out 516. So amount of money that banks are lending
In first case, bank could lend 720 rupees. In second case, bank could lend 516 rupees. Now this will also go to some bank. Again, some as cash, some as deposit, some as reserve, then again loan. So can you see the amount of money that banks are able to loan? This was the first loan given by bank. This is the second loan given as by bank. This is the multiplication process, and the amount of loan that bank can give is declining over time. Can you see this decline? That amount of loan that bank can give is declining over time. Are you able to see the decline? पहला बैंक 720 लोन कर पा रहा है, दूसरा बैंक 516 लोन कर पा रहा है, ऐसे और डिक्लाइन होगा, और डिक्लाइन होता रहेगा. अब आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपके सीसैट के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है, नॉट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी, कैन बी इंपॉर्टेंट इन सीसैट. I can write this as a decreasing geometric progression. Again, ये नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको कि पहले the money was, let's say, some value of 1000, then it was 1000 into some number x, then bank could loan out 1000 into x squared, then 1000 into x cube. ऐसा बैंक लोन आउट कर पा रहा था. This x is going to be less than 1. पहले money was 1000, bank could loan out 720, so x is, let's say, 7 by 10, 700 मान लेते हैं. तो इस केस में क्या होगा? 49 by 100. So bank can now loan out 490. इस केस में क्या होगा? और कम होता जाएगा. This is called a decreasing geometric progression. Only important for maths, not important for this exam in terms of general studies. जब ऐसी कोई डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, इसका एक सम निकाला जा सकता है. अगर ये इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती, पहले 1000 जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया विद 720, पहले 720, फिर 800, फिर 850, ऐसे करके ये बढ़ता जाता, तो हम इसका टोटल का सम नहीं निकाल सकते थे. बट यहाँ क्या हो रहा है? पहले 720, फिर 500, फिर लेट्स से 300, फिर लेट्स से 100, फिर 400, फिर 40, फिर 10, फिर 2, फिर 1. कहीं ना कहीं जाके ये 1 से कम हो जाएगा, बिकॉज at every stage it is getting lesser and lesser. For such geometric progression, I can find the sum, and the formula to find this sum is called a divided by 1 minus r. Again, not important for economy. Basically ये बात आपको समझ आनी चाहिए, because since the value of loans is declining, पहले 720, फिर 516, फिर let's say 300, फिर 200, फिर 50, फिर 30, फिर 20, फिर 10. अब 10 रुपीज से कम तो कोई लोन लेगा ही नहीं. तो मैं अगर ये सारा ऐड कर लूं तो मैं इसकी एक वैल्यू निकाल सकता हूं. ठीक है, इसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है, बट वी विल नॉट गो इनटू द फॉर्मूला डेरिवेशन. आप ये अपने टाइम पे देख सकते हो अगर आपको सीसैट में हेल्प चाहिए. आई ऑनेस्टली डोंट नो अब सीसैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं. आई डोंट थिंक इतनी डिटेल में आते हैं, बट जस्ट फॉर द मैथमेटिकल प्रूफ आई हैव गिवन यू दिस. ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइनिंग ये कितना कम होगा. ये 720 से 516 हुआ, ये क्या चीज डिटरमाइन कर रही है इसको? एक डिटरमाइन कर रहा है सीडीआर, एक डिटरमाइन कर रहा है आरडीआर. तो अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो इन दोनों के टर्म्स में कोई फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला देख लेते हैं. When calculated, I will just show you. When calculated, that formula comes out to this. We have seen that money multiplier is inversely proportional to RDR. Money multiplier is inversely proportional to CDR. When I solve for it in the form of that geometric progression, कैसे solve करते हैं भूल जाओ. जब मैं solve करूंगा तो ये formula आता है that money multiplier is equal to 1 plus CDR divided by CDR plus RDR. ये एनसीईआरटी में 12th क्लास के एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दिया है, अगर किसी ने देखना हो तो यू कैन सी इट इन द 12th क्लास एनसीईआरटी. अब सीडीआर हमने क्या माना था? सीडीआर हमने क्या माना था? कांस्टेंट फॉर द एंटायर इकोनॉमी, बिकॉज इट इज अ बिहेवियरल फैक्टर.
कांस्टेंट फॉर द एंटायर इकोनॉमी, इट इज अ बिहेवियरल फैक्टर, तो उसको हम हटा देते हैं और हम देखते हैं दैट मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय आरडीआर, और रादर इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आरडीआर. मनी मल्टीप्लायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आरडीआर. ठीक है, यही चीजें हैं, बस इसको लिखने का एक तरीका है. अगेन इफ यू वांट दिस डेरिवेशन इट्स फाइन, अदरवाइज इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस मच एंड ये हमने डिराइव किया, दिस शुड बी सफिशिएंट. अब एक बार देख लेते हैं. अब आपका जो इंटरेस्ट रेट वाला क्वेश्चन है, आपको डाउट होता है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट क्या है. मनी मल्टीप्लायर पहले देखते हैं क्या है. मनी मल्टीप्लायर, दिस इज व्हाट वी रेड, एमएस, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू एम नॉट. मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर इज बैंक्स मल्टीप्लाइंग मनी. मनी मल्टीप्लायर इज बैंक्स मल्टीप्लाइंग द मनी, है ना, डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो. Money multiplier is inversely proportional to RDR. Money multiplier is inversely proportional to currency deposit ratio. ये भी हमने देख लिया. अब बैंक का केस देखते हैं. बैंक हैज टेकन सर्टेन मनी एज डिपॉजिट. बैंक ने कुछ डिपॉजिट में पैसे लिए. बैंक विल गिव सर्टेन सेविंग्स इंटरेस्ट रेट. बैंक विल देन गिव सर्टेन मनी आउट एज लोन. बैंक विल रिसीव सम लोन इंटरेस्ट रेट. तो बैंक को पे करना है सेविंग्स इंटरेस्ट रेट, बैंक को रिसीव करना है लोन इंटरेस्ट रेट. अगर बैंक सेविंग्स इंटरेस्ट रेट आज की डेट में लेट से सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट देता है बैंक 4% और लोन पे इंटरेस्ट रेट लेता है बैंक 8%. आज मान लो ये कंडीशन है, ऑब्वियसली बैंक विल चार्ज मोर मनी, दैट इज हाउ बैंक विल मेक इट्स प्रॉफिट. बैंक जो लोन देता है, 100 रुपीज का लोन देता है, उस पर रिसीव करता है 8%, डिपॉजिटर्स को देता है 4%, जो 4% बच गया दैट इज बैंक्स अर्निंग. इफ फॉर सम रीजन आई मेक द सेविंग्स इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बैंक 8%, मैंने बैंक को कहा आपको सेविंग्स पे 8% देना ही पड़ेगा, देन बैंक विल हैव टू इंक्रीज इट्स लोन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो. बैंक को अपना लोन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा के 12% करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ रही है कि अगर मैंने बैंक को कहा कि अपना सेविंग्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, तो बैंक को लोन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा. है ना? तो अब अगर मैं बोलूं इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, लेट्स से आई यूज द टर्म इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. आप किसी को ही मान लो, अगर सेविंग्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर देगा. अगर लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बैंक को लोन देने पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो बैंक ज्यादा लोग चाहेगा कि ज्यादा लोग मेरे को डिपॉजिट दे दें. अगर बैंक इसको इंक्रीज कर देता है, लोन इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, नाउ बैंक इज अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, it will want more and more people to deposit their money here. For that it will have to increase the savings interest rate also. So interest rates in the economy move together. When savings interest rate increase, loan interest rate also increase. Decrease भी same है. So अब मैं बोलूं interest rates in the economy, this interest rate or this interest rate, the values are different but they move together. They will increase together, they will decrease together. ये बात क्लियर हुई? ये भी आप लोगों का एक डाउट था कि कौन सा इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट, दे विल मूव टुगेदर ना. मैं किसी भी इंटरेस्ट रेट को बोल दूं, ठीक है, आगे चलते हैं. वॉट एवर इज द डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट, डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड डिपॉजिट रेट. जैसे यहां पर लेंडिंग रेट इज 8%, deposit rate is 4%. Deposit rate means savings rate. Savings rate is 4%. Lending rate is 8%. Whatever is this difference, this is the profit that bank will make.
This is sometimes also known as spread, the difference, spread between the two. What is the spread between lending and savings rate? This is the profit that bank makes. इसको spread भी बोलते हैं. Banks can lend because people trust that banks will be able to repay their money. I keep my money in a savings bank because I trust that this bank will be able to give me back my money when I need it. So assume that only a fraction of total deposits will be demanded at a time. ऐसे fractional reserve तो हमने पहले भी देखा है. इसी के लिए आरबीआई कहता है एक रिजर्व डिपॉजिट रेशियो रखो. This creates trust. This is RBI's responsibility. So RBI will dictate the RDR. And RBI dictates RDR. So RBI gives RDR to a bank as regulation. To operate as a bank, you must maintain this RDR. This is regulation of Reserve Bank of India. If RDR was left up to banks को कहते हैं आप, RBI कहता है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक्स खुद डिसाइड करो. Banks would decide by themselves आपको जितना RDR रखना है. तो बैंक्स क्या कहते हैं, हमें तो कोई भी RDR नहीं रखना. We want to loan out all the funds. We have received 800 rupees. We would like to loan out 800 rupees. Because उनको सेविंग्स इंटरेस्ट कितने पे देना है इस केस में पहले बताओ. बैंक receives 800 rupees. Bank keeps 80 as reserve. Banks loan out 720 rupees. Savings interest rate is 4%. Bank has to pay 4% of 800. Loan interest rate, this is loan. Loan interest rate is 8%. Bank will receive 8% of 720. ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है? गुड. अब देखो, बैंक्स विल रिसीव 8% ऑफ 720. तो अब अगर बैंक के ऊपर होता, इफ इट वर अप टू द बैंक, बैंक तो चाहता मैं एक भी रिजर्व ना रखूं. अगर बैंक कोई भी रिजर्व ना रखता तो बैंक would have loaned out 800 and it would have received 8% of 800, which would be more. But अगर बैंक कोई भी रिजर्व नहीं रखता तो क्या होता? If bank would have kept no reserve, when people would have gone to the bank would have kept no reserve. When people would have gone to the bank, these people would have said, give me my money back. Bank would have said, I don't have any money. So everyone would think that their money from the bank is gone. So everyone would run to the banks to extract their money out, called situation of bank run. If RDR was up to banks, banks would keep very little reserves or no reserves. This would lead to bank run. People would run to the bank to withdraw deposits due to loss of trust. Maintaining this trust is responsibility of RBI. So RBI will dictate this RDR. Bank run clear हुआ होगा? अब RDR is given as regulation. RBI gives RDR as regulation. In our country, RDR is of two types, CRR and SLR. This we will read next. अब हम आगे पढ़ेंगे RDR के दो टाइप्स, CRR और SLR. Currency deposit ratio क्या है? Represents the banking habit of the population, influenced by payments technology, spending preferences, seasonality, also by interest rate. Savings पे कितना interest rate मिल रहा है उससे भी influence होगा, but not only this factor. This is a behavioral factor. Bank receive money. Bank receives certain money. They keep certain as reserves due to RDR. They lend out the rest. Borrower gets this lending, he spends, gives to receiver. He keeps certain as cash, keeps certain as deposit. This again goes to bank. यही हमने पढ़ा. This cycle is what we had read with that example of P1, P2. From here we come to this understanding of money supply and money multiplier. That M or money multiplier, we read that
money multiplier is inversely proportional to reserve deposit ratio. Money multiplier is inversely proportional to currency deposit ratio. Money creation of money is an essential feature of the banking system. Creation of money means multiplication of money here. Money creation is done by RBI. Context important है. Money creation here means money multiplication. RBI controls the money supply primarily by controlling banks' ability to create money. देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं that money supply in the economy depends on money multiplier into money created by RBI. This is controlled by RBI directly. RBI controls this directly. This also RBI controls how? Controls through its control of RDR. M is inversely proportional to RDR. So either RBI can control M0 or RBI can control money multiplier through its control of RDR. Yes? This is all that monetary policy is. Monetary policy would mean RBI is either controlling this or RBI is controlling this. यही हम आगे देखने वाले हैं. Simple, logical, nothing to mug up. Monetary policy is either RBI controlling small m or RBI controlling M0. This will help RBI control money supply. When RBI controls money supply, what happens? Demand of money, supply of money. Through this, RBI can either increase the supply of money or decrease the supply of money. So RBI can either decrease the interest rate or increase the interest rate. And which interest rate? All interest rates. Well, interest rates rise. What happens? Consumption declines, investment declines. अब आपको और समझ आएगा. All interest rates move together. When interest rate increases, that means savings interest rate is also high. Loan interest rate is also going up. Yes. So people, if they are getting very high savings interest rate, they will say, let's save our money. So savings account में डाल दो, खर्चा बाद में करेंगे. Let's save as much as we can. When loan interest rates are high, so consumption will go down when savings interest rate go high. Savings interest rate is high, people will say, let me save. I don't want to spend right now, I will spend later. Consumption goes down. When loan interest rate goes up, businesses say, I don't want to take a loan. Loans are very expensive. Investment goes down. When consumption and investment goes down, aggregate demand goes down. When aggregate demand goes down, price levels go down. So RBI, through the control of these two, through monetary policy, can control aggregate demand, therefore can control price levels, which is nothing but inflation control. Absolutely clear or not? This is why it is RBI's job to control inflation. सब कनेक्ट हो गया साथ में? कुछ रटा तो नहीं? सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे तो थे. यही कॉन्सेप्ट तो पूछ रखा था हर क्वेश्चन में. अब आरडीआर को आगे देख लेंगे और इन टूल्स को आगे देख लेंगे जिनसे M0 और M कंट्रोल होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी खत्म हो जाएगा. आपको बोल रखा है मैंने, अगर आप पुराना रिवाइज करते रहोगे तो सब कुछ वहीं से डराइव होगा, सब कुछ लॉजिकल है. आगे देखते हैं. याद करो, कुछ पढ़ा था हमने, ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ. आरबीआई कैन ईदर यूज मनी सप्लाई टू कॉज ग्रोथ और दे कैन यूज मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. ये भी हमने देखा था. इसका रीजन यहां से आता है ना. ग्रोथ करने के लिए क्या होगा? आपको ट्रांजैक्शंस करवानी पड़ेंगी. ग्रोथ करने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस करानी पड़ेंगी, तो आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी. व्हेन यू इंक्रीज द मनी सप्लाई, interest rates go down,
aggregate demand goes up, growth happens. But when you have to control inflation, you have to decrease the money supply. You decrease the money supply, interest rates go up, aggregate demand goes down and price levels go down. इसके लिए हमने प्राइस लेवल में एम का फैक्टर भी पढ़ा था. प्राइस लेवल्स डिपेंडेंट ऑन मनी सप्लाई. फिशर इक्वेशन याद करो, हमने पढ़ा था प्राइस लेवल्स डिपेंड ऑन मनी सप्लाई. सो आरबीआई कैन ईदर गो फॉर ग्रोथ और फॉर इन्फ्लेशन. ये भी हम देख चुके हैं कैसे. अब ये झगड़ा हुआ कि आरबीआई ग्रोथ पे फोकस करे या इन्फ्लेशन पे फोकस करे. आरबीआई कैसे ले अब डिसीजन. एक तरफ आरबीआई को ग्रोथ भी करानी है, एक तरफ आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है. आरबीआई हैज टू डू ग्रोथ एंड आरबीआई हैज टू एंश्योर दैट इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. हाउ डज आरबीआई टेक इट्स डिसीजन नाउ? Till 2015 these decisions were taken arbitrarily. In 2015 there was an agreement between RBI and government. This agreement was called inflation targeting framework. That RBI's main target is to control inflation regardless of what happens to growth. First RBI will control inflation, then RBI will look at growth. This was decided in the inflation targeting framework in 2015. So RBI was told inflation is your primary goal. So RBI asked, what is our target? Government said your target is 4 plus minus 2% as measured by CPI combined. So measured by CPI combined, inflation in India should always be in the range of between 2 and 6%. Not lower than 2%, not higher than 6%. Because what is the objective? Low, between 2 and 6, not 0, low and stable rate of inflation. Stable between this range, isse bahar nahi, stable in this range. Low and stable rate of inflation, one macroeconomic target given to RBI as per inflation targeting framework. How will RBI do this? They will use control of money supply. How will they control money supply? Either they will control small m or they will control m naught. This is it. कल के नोट्स डन. अब आज के पढ़ लेते हैं. Now simple topic, control of money supply. Money supply is equal to m into m naught. How will RBI control money supply? That is the next question. Objective of RBI is maintain trust in the currency system. This is the broad objective. Under this there are two objectives, growth and inflation. RBI can either facilitate growth. For facilitating growth, more money and more transactions are needed. To control inflation, you have to decrease the money supply. ये देख चुके हैं. So growth inflation trade-off, monetary policy dilemma. अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में है. Look at this news. This is news of I think September. September में ही आते हैं GDP figures. So yeah, July September quarter figures come I think in November. India GDP growth slows to 7-quarter low of 5.4% in July September among weak consumption. समझ आ रहा है क्या हुआ होगा? Consumption has declined. When consumption has declined, India's GDP growth has slowed. है ना? Slow growth हो रही है. Second thing, India's retail inflation in October quickens to 6.21%, breaches RBI tolerance band. What is this tolerance band? 4 plus minus 2%. So 2 to 6%. It has breached RBI's tolerance band for first time since August 2023. Now RBI is in a situation where growth is slowing. We are not in recession. Growth is not going down. It is slowing. 5.4% for India is slow rate of growth. There is still growth, but slow rate of growth. Inflation is high, growth is low.
Now what should RBI do? If RBI controls inflation, growth will slow even further. If RBI goes for growth, inflation will rise even further. RBI is now in a dilemma. Understand the news. तभी कहता हूं न्यूज़पेपर मत पढ़ो. Now you will understand everything. ये बात सारी क्लियर हो रही है? ठीक है. This is the growth inflation trade-off or the monetary policy dilemma. So, अब हम पढ़ते हैं what should be the decision making that RBI should do. RBI कैसे डिसाइड करे, उसे क्या करना चाहिए. देखो, there can be 4 situations, है ना. This is measurement of, this vertical line is measurement of inflation. Inflation can be high or low. Growth, this is measurement of growth. Growth can be high or low. So this first number is representing high inflation, high growth. Second number is representing high growth, low inflation. Fourth is representing sorry about that. Fourth is representing low inflation, low growth. Third is representing high inflation, low growth. These are the 4 things. RBI can control money supply. What decision should RBI take? Whether it should increase the money supply or decrease the money supply in these 4 cases. This is what we will read. You have 4 minutes now. Spend 1 minute on each of these factors. You are now RBI governor. Put yourself in position of RBI governor. Make 2 graphs. One is, for simplicity, you can make this graph also like this. One is this graph. Call this demand for money and money supply. Simplicity के लिए ऐसे बना सकते हैं. One graph is this. This is one graph. Aggregate demand, aggregate supply. You can move this vertical line. You can increase the money supply or decrease the money supply. You know what effects it is going to have here. Now plan what you will do in all 4 cases. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये एक्सरसाइज करो. Obviously, I will teach you this, but take the next 4 minutes and think what will happen in each case. आप एक जगह फंसोगे, वो stagflation होता है, वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा. But first, let's read this. You try in 4 minutes to come up with solutions for these problems. You are RBI governor. You can only control this straight line. चलो करो.
हाँ जी गवर्नर साहब, लिए आपने कुछ डिसीजंस? क्या करोगे मनी सप्लाई का? डिड यू टेक सम डिसीजंस मिस्टर और मिसेस गवर्नर और मिस गवर्नर? डिड यू टेक द डिसीजंस? चलो देखते हैं आपने क्या डिसीजंस लिए। अब देखते हैं आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए थे। लेट्स सी ऑल द डिसीजंस। केस 1, देयर इज हाई ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। योर जॉब इज कंट्रोल इन्फ्लेशन। आपका प्राइमरी काम क्या है? कंट्रोल इन्फ्लेशन। व्हाट विल यू डू? हाई ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, यू विल डिक्रीज मनी सप्लाई. Decrease money supply will lead to decrease money supply, increase interest rate. Increasing interest rate will lead to consumption coming down, investment coming down, aggregate demand would come down, price levels would come down, growth will also come down. Now you can't make growth come down beyond a point. आपको दो ग्राफ देखने थे. अब इस केस में I have told you there is high growth, high inflation. Your job is to control inflation. You will say reduce the money supply. When you reduce the money supply, what will happen? Interest rates will go up, consumption would come down, investment would come down. That means aggregate demand would come down. When aggregate demand would come down, new aggregate demand level is here. This was the price level. Now this is the price level. So you have reduced the inflation, but you have also caused a reduction in growth. You have also caused a reduction in growth because this was GDP. Now this is GDP. So you have, because of your decision, you have also caused a reduction in the growth. So you will decrease the price level. Reduction in growth will happen. Reduction in growth means unemployment will increase. Yes. So you will decrease the money supply till the point that this is acceptable. आपको ग्रोथ तो कम करनी ही पड़ेगी अब, but you will reduce it till the point it becomes acceptable. So the decision you will take is decreasing money supply, which will lead to expected reduction in price, expected reduction of growth. Money supply should be reduced to a level that growth does not suffer. It will suffer a little bit, does not suffer much, and unemployment does not rise beyond tolerance range. अगर आपकी इन्फ्लेशन की एक टॉलरेंस रेंज है, तो आपकी एक अनएम्प्लॉयमेंट की भी टॉलरेंस रेंज है. उससे बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. थोड़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आपके डिसीजन की वजह से, बिकॉज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक दिस. आप इन्फ्लेशन अगर कम करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज अ लिटिल बिट, बट टॉलरेंस रेंज में रहने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, तभी बात बनेगी, है ना. सो यू विल डिक्रीज द मनी सप्लाई, यू विल कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ये अगर अभी इतना मनी सप्लाई हो रहा है, आप कहोगे इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इतना कर दो, नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. You will make it tight, difficult for people to get money, reduce the money in the system, contract it, make it tight. Clear हुई ये बात?
गवर्नर सर और गवर्नर मैम, इज दिस क्लियर? चलो सेकंड सिचुएशन, हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन। आपका क्या काम है गवर्नर जी? आपका काम है लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी लो, आप क्या करोगे? नथिंग, मास्टरली इनएक्टिविटी, डू नथिंग। ग्रोथ बढ़िया चल रही है, इन्फ्लेशन कम है, आप चाहते हो इन्फ्लेशन कम रहे, इन्फ्लेशन कम ही है। यू विल से मेंटेन स्टेटस को, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। यू विल से न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, let it be, let it be at the level it is. This is exactly what I want high growth and low inflation, so let it be neutral monetary policy, don't change anything. थर्ड केस, ये क्लियर है, ये वाला केस क्लियर है, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी केसेस क्लियर है, तो सिंपल है ना, इसमें तो फेवरेबल सिचुएशन है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट केस, लो ग्रोथ लो इन्फ्लेशन। आपके हिसाब से इन्फ्लेशन कम है, योर जॉब इज डन, बट ग्रोथ इज लो। Your primary responsibility is low inflation, which is correct, which is happening. But growth is low. Growth is also low. You don't like low growth. You want high growth. So you will say, let me increase the money supply. In this case, what will you do? You will increase the money supply. You will say, let me increase money supply. When you increase money supply, what will happen? Interest rate will come down. Interest rate will come down. That means consumption will increase. Investment will increase. That means aggregate demand will increase. So aggregate demand was here, it will go here. This is aggregate supply. Earlier growth was at this level. Now there has been increase in GDP. You have caused increase in GDP. Great, you have increased growth, but you have also increased price levels. So you will increase the money supply. आप चाहते हो growth high हो. So you will increase the money supply till the point that this inflation is tolerable. जहां तक ये टॉलरेट करी जा सके वहां तक यू विल इंक्रीज, यू विल नॉट कीप इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। आज इन्फ्लेशन 2% पे है, आपने मनी सप्लाई इंक्रीज करी और इन्फ्लेशन 4% पे हो गई, आपको ये नो प्रॉब्लम, दिस इज टॉलरेबल, लेट मी कीप इंक्रीजिंग मनी सप्लाई टिल इट्स इन द टॉलरेंस रेंज सो दैट आई कैन गिव इम्पेटस टू ग्रोथ। थर्ड केस, low growth low inflation, you will increase the money supply, there is expected increase of growth, expected increase of growth, यहां पे इसको आई एम सॉरी अबाउट दिस, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्राइसेस, expected increase in prices, so you should do this till prices are in tolerance range. Please correct this, this is expected increase in prices. You will increase money supply, you will increase money supply till this price level increase is in the tolerance range. So if this is the current money supply, you will say expand the money supply, give more money to people, expansionary monetary policy till prices are in tolerance range. आप ये अब जैसे ही ये 6% आ जाएगा, कहेगा now stop, now I am reaching my tolerance range, now no longer beyond this. Till it's in tolerance range, you will keep increasing money supply because you want growth to rise. So low growth, low inflation, third option, decision taken is increasing the money supply, also known as expanding the money supply, known as expansionary monetary policy. ये क्लियर हुआ? Expand the money supply till inflation is in tolerance range, not constantly expand. Known as expansionary monetary policy.
आगे देखते हैं फोर्थ केस। अब आप फंस चुके हो। देयर इज लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। लो ग्रोथ यहां से मतलब ये नहीं है जो हमने सिचुएशन देखी थी वो लो ग्रोथ नहीं होती। दिस सिचुएशन टू बी कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, ग्रोथ हैज टू बी एक्सट्रीमली लो, 0%, 0.1%. It can be negative also, minus 0.1%. Economy is actually contracting. Now growth is very low, inflation is very high. If you increase money supply, what happens? If you increase money supply, you will cause growth to happen. You will increase the growth, but you will also increase the inflation. If you decrease the money supply, you will control inflation. But what will be the problem now? You will also reduce the growth further. अब बताइए गवर्नर सर और गवर्नर मैम, अब क्या करोगे आप? नाउ व्हाट वी विल डू? कोई कह रहा है रिजाइन। रिजाइन मत करना, ऐसे रिजाइन नहीं करना होता। है ना, बट अब करोगे क्या? नहीं, ग्रोथ इससे कम हो सकती है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। इकोनॉमी कैन डिक्लाइन ऑल्सो ना। आज इकोनॉमी की आउटपुट है $1 बिलियन, कल हो जाए 900 मिलियन, डिक्लाइन हो गई। नाउ यू विल से दैट गवर्नमेंट हैज टू टूल्स, नॉट वन ओनली टूल। हमने क्या देखा था? दैट गवर्नमेंट हैज टू टूल्स। वन टूल इज मॉनेटरी पॉलिसी, one tool is fiscal policy. Government has two tools. Now we are in a dangerous situation, we need both the tools. So you will say we will do calibration of monetary policy and fiscal policy. Calibration of monetary policy and fiscal policy. If you go for price control, that means you decrease the money supply, it will lead to no growth happening, जो मैंने आपको समझाया। तो अब आपको क्या, अब now you are in a dilemma. Now you need to calibrate these two policies together. दोनों को साथ में निकालना होगा ताकि हम ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन से निकलें। So during stagflation, firstly we will find out the reasons for low growth and high inflation. ये क्यों हो रहा है? Why is this happening? First we need to understand why is it happening. We will study the situation. If growth is due to less money supply, एक ऑप्शन देखो, हमें क्या पता है? ग्रोथ इज लो, इन्फ्लेशन इज हाई, दोनों चीजें ही खराब है। फर्स्ट सिचुएशन इज आई फाइंड आउट दैट ग्रोथ इज लो ड्यू टू less money supply. Inflation is high due to some other factors. What could be some other factors here? Supply shock. Supply कम हो गई, COVID-19 आ गया. This is what we were facing in COVID-19. High inflation, low growth. You will see that maybe this problem is not due to aggregate demand. This problem is because there has been a supply shock. Earlier this was aggregate supply, now this is aggregate supply. Earlier this was price levels. Aggregate supply reduced. These are the price levels. Price levels have increased. This is due to some other reason. Inflation is not due to demand being high. You can only control aggregate demand. आप तो aggregate demand को ही control कर सकते हो ना. But inflation is due to some other reason. So you will say growth is low due to money supply. You find out first case, growth is low due to money supply. Inflation is high due to some other factors. Now what will you do? अब बताओ क्या करोगे? In this case, what will you do?
अरे इंक्रीज द मनी सप्लाई, इंक्रीज द मनी सप्लाई। आप आरबीआई हो, यू आर आरबीआई गवर्नर, यू आर नॉट द गवर्नमेंट। डोंट टेल मी अबाउट सब्सिडीज एंड टैक्सेस, यू आर आरबीआई गवर्नर, यू कैन ओनली कंट्रोल मनी सप्लाई। You will increase money supply na, in this case you will increase money supply and give recommendations to government. Government कुछ भी करे, you will increase money supply na, you will increase money supply, because money supply is not the reason for inflation, but money supply is the reason for low growth. So on your end you will increase money supply to solve this problem. Inflation अब government control करेगी, कैसे करती है government inflation control वो हम देखेंगे, है ना। सेकंड केस, इन्फ्लेशन इज हाई, यहां पर क्या था, इन्फ्लेशन वाज हाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, सॉरी, इन्फ्लेशन वाज हाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स। नाउ यू सी इन्फ्लेशन इज हाई ड्यू टू मनी सप्लाई, ग्रोथ इज लो ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। अब क्या करोगे, you are RBI governor, what will you do now? बस इसीलिए आप नहीं हो आरबीआई गवर्नर, जो आप आंसर दे रहे हो। अरे नाउ यू कांट डिक्रीज मनी सप्लाई, इफ यू डिक्रीज मनी सप्लाई इट विल स्टिल हैव एन इंपैक्ट ऑन ग्रोथ, राइट। चाहे अभी किसी और रीजन से है, अगर आपने मनी सप्लाई इस केस में कम कर दी तो ग्रोथ विल गो डाउन, राइट। मनी सप्लाई विल ऑलवेज हैव एन इंपैक्ट ऑन ग्रोथ। कैन यू अफोर्ड ग्रोथ टू गो डाउन फर्दर फ्रॉम दिस? विल यू पुट द इकोनॉमी इन अ रिसेशन टू कंट्रोल प्राइसेस? नो। इसीलिए, because this is a very tough situation, there are supply side factors, demand side factors and lots of things acting at once. इसीलिए अगर ये इतना ही सिंपल होता तो मैं बन जाता जाके आरबीआई गवर्नर। इसलिए मैं नहीं हूं आरबीआई गवर्नर और आप भी नहीं हो। आई होप आप कभी बनो अपनी लाइफ में, बट अभी आप नहीं हो बिकॉज, और मैं भी नहीं हूं बिकॉज दिस इज नॉट सिंपल टू हैंडल। What you do now is you be careful about money supply. You keep the money supply as it is. You tolerate some inflation till government can come in and increase growth through fiscal policy. First, you wait for government to increase growth through fiscal policy. When growth reaches a certain level, then you decrease money supply. Amid high inflation, RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%. ठीक है, you will be careful about money supply and growth is increased by fiscal policy. Fiscal policy would mean government spending. तो क्या मतलब हुआ, when you are in a stagflation, be careful about money supply and ask that government increase its spending. When government spending increases, ये क्वेश्चन देख चुके हैं हम, likely step to be taken in a recession, increase of government spending. Government spending will increase, this will increase aggregate demand, this will lead to growth. When growth reaches a certain level, then I will control money supply. So I will first wait for the government to spend lots of money in the economy. I will wait for government to launch a fiscal stimulus. Till then, I will keep my money supply unchanged. When this fiscal stimulus takes effect, growth is back, then I will reduce the money supply. समझ आया? This is a difficult situation. ठीक है, आगे देखते हैं। अब आरबीआई ऑल्सो कम्युनिकेट्स, आरबीआई कैसे लेता है डिसीजन, ये हम अभी देखेंगे, मनी सप्लाई पे डिसीजन कैसे होता है। Let's say RBI takes this decision every 2 months. I will explain monetary policy committee to you today only. RBI takes this decision every 2 months. Let's say RBI takes decision. RBI has taken last
meeting in December. RBI took decision in December. RBI also, after December में meeting हुई, RBI tells what it's going to do with money supply. RBI also tells what is its outlook towards the future. वो आगे इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं. This outlook towards the future is called stance, expected future decision. Okay. RBI says today we are taking a neutral monetary policy. Today, in December I am saying neutral monetary policy. Nothing changes. But in next decision will be in February. In Feb, next decision is going to happen. Today I expect, in December, today we are in December. In December I say monetary policy is neutral. I expect that in the future I will have to reduce the money supply. I expect that I will have to reduce the money supply, known as stance. ये भी रट रखा होता है लोगों ने stance का meaning. Stance is future decision की expectation. RBI says today my monetary policy is neutral. In the future I expect, when I meet in February, I expect that I will increase the money supply. Dovish stance or expansionary stance, contractionary stance. RBI can also say today my monetary policy is neutral, but in the future I also expect that I will be neutral. Neutral stance. समझ आया stance का meaning? Stance is my expectation of what decision I will now take in the future. अब हो सकता है मैं फ्यूचर में इससे कुछ अलग डिसीजन ले लूं. I might take some different decision in the future, but right now this is my expectation. Stance. Hawkish stance, expected future decision of contraction. Dovish stance, expected future decision of expansion. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप बताओ, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, देखते हैं आप लोग कितना न्यूज वगैरह फॉलो करते हो. इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, this is heard in the context of which country? Which country passed Inflation Reduction Act? They passed it in 2022. Some country in the world passed Inflation Reduction Act in 2022. What was the name of the country? India मत बोल देना यार please. USA. आज हम समझेंगे why was Inflation Reduction Act passed. अब हम समझेंगे Inflation Reduction Act क्यों पास हुई. We will now have to hear the story of the global financial crisis. इसके लिए there is a very good movie you can watch called The Big Short. The Big Short. I think अब ये Netflix पे नहीं है, आप लेकिन ऑनलाइन जाओगे तो डेली मोशन और ऐसी वेबसाइट्स पे आपको दिख जाएगी. There is also a documentary called Age of Easy Money. Beautiful documentary, beautiful. Age of Easy Money. This is after global financial crisis. There is one more documentary on global financial crisis. ये है on global financial crisis of 2008. I think there is one more documentary. Wait, let me see the name. ये आपको देखनी है. The second one that I will write, you will have to watch today. Inside Job. This, please watch this. This will be on YouTube, I think. Inside Job. Inside Job is the story of what happened in 2008
the global financial crisis, the crash of the housing market in the US. ये देख लो या ये देख लो. This would be more informative. This is very fun. ठीक है, जो अब आपके डिसीजन है. Then इसके बाद you watch one of these and then you watch this Age of Easy Money. In the next week, watch these two movies as relaxation, खाना खाते हुए. बहुत मजा आएगा आपको. Age of Easy Money. Age of Easy Money led to very high inflation. Then US had to pass Inflation Reduction Act. अब देखते हैं क्या हुआ. In the global financial crisis of 2008, what broadly happened was there was something called collateralized debt obligation and credit default swaps. मूवी देखना, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा. When I teach you capital markets, I'll teach you. But अगर आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा. ठीक है. What happened was basically the housing market collapsed in the US because US में housing market में very cheaply loans were available. Very cheaply loans were available, and what happened? Because of these cheap loans, people were unable to pay back these loans. Loans were given to very bad customers, sometimes also called subprime loans. Subprime crisis भी बोलते हैं इसको. Subprime crisis. Teaser loans. Teaser loans होते हैं कि पहले 2 years, first 2 years interest rate is 2%, then it is 10%. They will tease you with low interest rate. So teaser loans, subprime loans, this were given. People bought a lot of houses. Housing market value went up. People could not pay back their mortgages. Housing market crashed. Loan market crashed. Banks crashed. Stock market crashed. Broadly बता रहा हूँ. Watch the movie. अब because after the 2008 financial crisis, अब financial crisis हो गया है. What happened was banks had just seen lots of NPAs, huge number of NPAs, huge number of NPAs because people had not paid back. Okay, huge number of NPAs bank had seen. There was a huge crisis. So at this time, banks were now, after the financial crisis is over, banks are not willing to lend. Banks are not willing to lend. Economy is in recession. US economy is in recession. Global economy is in recession. Banks are not willing to lend. They are very wary. They are very scared that now if they lend again, their same problem will happen. So banks are not willing to lend. If banks don't lend, banks are accepting deposits, but they are not lending. Very few lending, very small lending exercises, that too very careful, etc. If banks stop lending, what stops happening? Out of these three things, what do banks affect? There is effect on this. Money multiplier will go down if banks will stop lending. Yes. Banks stopped lending, money multiplier went down. It went down below 1. बहुत कम हो गया money multiplier. Right? What is happening to the economy? Economy is in recession. Recession is very low aggregate demand. Negative growth. As the government, what would you like to do? As the central bank, what would you like to do? Increase the aggregate demand. To increase the aggregate demand, what would you like to do? Increase the money supply. To increase the money supply, more consumption, more investment, increase in aggregate demand. This is what you want to do. But with you trying to increase the money supply, problem is money multiplier is very low. Banks are not lending. Now what will you need to do? अब आपको क्या करना पड़ेगा? सही बताना, इसका जवाब मजा आ जाएगा. What will you need to do now? You have to increase money supply. Money supply is M into M naught. M is very low. अब आपको क्या करना पड़ेगा to increase the money supply? What will you need to do to increase the money supply now? Print notes. ये बढ़ा सकते हो ना आप. You can increase this ना. M naught, create money. आपके हाथ में है ना M naught तो. M naught is in your hands, right? Funding of banks, capitalization of banks, अभी तो बैंकिंग हमने पढ़ा ही नहीं.
बट ये तो आपके हाथ में है ना, एम नॉट इज इन योर हैंड्स, सो यू इंक्रीज एम नॉट, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी मल्टीप्लायर इज लो, बट अब ये तो आपके हाथ में है. दिस इज व्हाट द यूएस फेड डिड. In 2008, amount of money circulating was $850 billion. Money that US Fed had printed, high-powered money, M naught. Value of M naught was $850 billion. Money multiplier is very low. You need to increase money supply so that growth happens. Yes, they start printing money. By the time you reach 2021, value of M naught is $6.4 trillion. Trillion. Because you are printing and printing and printing more money. $6.4 trillion is now value of M naught. एक चीज और देखते हैं, जैसे आरबीआई गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है, यूएस में जो आरबीआई है उसका नाम है यूएस फेडरल रिजर्व. यूएस फेडरल रिजर्व एंड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ circular flow model. US Federal Reserve is not part of circular flow model. When US Federal Reserve decides to print money, just by printing, does this money reach circular flow? No. From this printing, they will have to buy some asset. When they buy this asset, then this money will enter the money supply or enter the circular flow. What asset do they buy? They bought government bonds. If government is constantly issuing bonds, means government is taking loan. Government is constantly issuing bonds. That means I am issuing a bond. That means I am taking loan. Bond is debt instrument. So government debt in the US, सुना होगा आपने ये. Government debt limits breached. $2 trillion of national debt, $3 trillion of national debt, because they are constantly printing these bonds, because they want to increase M naught. ये हो गया. M naught increased. M naught reached the levels of 6.4 trillion. This unconventional printing of notes, unconventional increase in money supply is called quantitative easing. Easing the money supply, expanding the money supply through quantitative measure of printing notes. Quantitative easing. Money multiplier in the US. Money multiplier in the US, these are the levels. It was at 3. This is money multiplier 1990s. This is 2000s, around 1.5. This is 2008 financial crisis. After this, money multiplier was in this phase less than 1. Money multiplier is less than 1. I have to increase money supply. I will have to increase M naught. If I increase M naught, money supply will increase. Government debt ceiling reached. Government takes huge debt because government has to issue now lots of bonds. M naught increased. What happened after 2018? What happened after 2018? 2018-19, US now started to come out of that complete recession. Now, US economy started becoming normal. 2018 is shown here on the graph. Money multiplier goes above 1. Because now banks have started lending, people have started gaining trust in the banking system, etc. Money multiplier goes greater than 1. You have printed huge amounts of money. Now what will happen to money supply? This you have increased hugely, and this has now recovered. What will happen to money supply? Huge increase in money supply post 2018. Huge increase of money supply. What happens now? अब क्या करें? Demand for money. Money supply was here first.
it has been a huge increase. So interest rates have fallen. Interest rates have fallen means consumption has increased, investment has increased, aggregate demand has increased. Huge increase in aggregate demand, huge increase in price levels, huge inflation in US post 2018. COVID also happened. Aggregate demand is already on the rise. Because of this, COVID happens, aggregate supply also moves inward, further increase in inflation. Now uncontrollable inflation levels in the US after COVID. 2022, US government comes and says Inflation Reduction Act. Clear or not? Now what happens? This process is called quantitative easing. Opposite of this process is taper the money supply. The US Fed would want to taper the money supply. Opposite of quantitative easing is federal tapering. Opposite of quantitative easing is federal tapering. Taper the money supply. Therefore, I am asking you to watch this movie, Age of Easy Money. YouTube पे documentary है, explains this beautifully. It's on a show called PBS, Public Broadcasting Service of the US only. Age of Easy Money. Why easy money? Easy monetary policy after global financial crisis led to quantitative easing, led to huge inflation. Now they are doing federal tapering because now they have to control the money supply. When they do federal tapering, what happens? Flight of money from India. People will sell their shares in India. Shares, bonds, whatever assets they have, they will sell because federal tapering is happening. ये भी हम समझ चुके हैं इसका logic last time. When they sell their shares and bonds छोड़ो, when they sell their shares, what happens? Sensex drops. Look at condition of Sensex. One of the reasons for this, if you will see in 1 month, it will be even lower. 6 months is now minus 5%. From this point, one of the reasons for this is the age of now difficult money. US Fed saying federal tapering. Decline of Sensex seen after that. है ना? समझ आ रहा है कहानी? ये कहानी समझ आई? Is this clear? This is one of the reasons. One of the reason. Capital markets पढ़ेंगे तो Sensex समझाऊंगा broadly. दोनों देखनी है दोनों. First watch Inside Job. First watch Inside Job, then watch Easy Money. Inside Job में रघुराम राजन जी भी हैं. Raghuram Rajan sir was one of the first people in this documentary it is shown. He was one of the first people to predict the global financial crisis in 2005. He predicted this crisis is going to happen in 2005. That was the brilliance of that man. He is in this movie. It's basically a documentary where they are taking interviews of various economists. Okay.
Anyway, चलिए अब आगे चलते। Let's now come to our last topic for today, the tools of monetary policy. Tools of monetary policy will be to control the money supply, the policy you make to control money supply. How can you control money supply? Either control this or control this. So either you control small m, which is money multiplier, or you control m naught, which is high powered money. Control one of these. Tools of monetary policy are of two types. One is quantitative tools. Quantitative tools means their effects can be quantified. They have an effect on money supply, and these effects can be directly quantified. You can measure how much effects. You can quantify the effects. Second is qualitative tools. Qualitative tools means they will have an effect, but this effect cannot be quantified. They will have an effect, but आप effect होगा, but आप measure नहीं कर पाओगे कितना effect होगा जरूर. Qualitative tools. Quantitative tools, they will of course either affect m or m naught, and the effect can be measured. You can quantify their effects. These are the tools we will read now, qualitative tools and quantitative tools. अब let's take small break of 3 minutes. आज ये टॉपिक हम खत्म करेंगे. We will finish this topic before we finish today. Class extend होगी तो होगी. पहला 1 घंटा हमने सिर्फ MCQs किए हैं. That was not part of the class. Therefore, we will extend today. Sorry or whatever, आपको जैसे समझना समझ लो. I can't change this. It will get extended. So 3 minutes break. After 3 minutes, we will read tools of monetary policy and we will stop. ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें आपने बहुत चीजें रट रखी हैं. What is liquidity adjustment facility? What is marginal standing facility? What is repo rate? Full form of repo rate, etc. आपका सारा आपको आज के बाद कुछ रटना नहीं पड़ेगा. This is my guarantee. But class will get extended. मैं चैट भी ऑन नहीं कर रहा आपका ओके नॉट ओके सुनने के लिए. अगर आप बोर हो गए हो तो you stop watching and you watch the last 1 hour recorded. I'll give you a break of 4 minutes. After that we'll start.
हाँ ठीक है। ऑल राइट, चलो अब पढ़ते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल राइट, quantitative tools, effects of those tools which can be measured, they can be quantified, effects can be quantified. Quantitative tools can affect either M or M naught. M naught would be RBI is directly increasing money supply by introducing more notes in the economy. Second, RBI is controlling banks' ability to create money or banks' ability to multiply money. Quantitative tools. First tool is open market operations. Open market. RBI generally deals with primary dealers. If RBI enters the open market and starts doing dealing, then what will happen? RBI enters the open market. RBI enters the open market. In this open market, RBI says, in the open market, we will sell government securities. I am standing in the open market. This is me. I will give money to RBI. Government security is government bond. अभी आप government bond मान लो. What is the meaning of the word security? What is government bond? What are different types of securities? We will see when we come to capital markets. अभी आप government bond मान लो. RBI sell government securities, takes money. Selling of government securities, RBI has decreased the money supply. By taking the currency that was in my hands, they have taken it away. They have decreased the money supply. RBI in the open market can say, we will buy government securities. I am there in the open market. RBI buys asset from me and RBI gives me money. RBI has increased the money supply. What is RBI controlling here? It is directly controlling M naught. It is not controlling it through bank's ability to lend. Directly controlling M naught, known as open market operations. Open market operations of RBI. Clear or not? कोई मुझे कह रहा है start trading. What makes you think I don't already do it? समझ आया ये बात? I don't do it. वैसे स्टॉक मार्केट पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि आपको भी नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग. Open market operations. What is happening? RBI is controlling money supply through control of M naught, increasing or decreasing M naught. Second case, RBI can control the money multiplier. RBI can control money multiplier. Money multiplier was inversely proportional to reserve deposit ratio. So RBI can control reserve deposit ratio. Reserve deposit ratio in our country are of two types. Two types of reserves bank have to keep. One is cash reserve ratio. One is statutory liquidity ratio. इन दोनों को देखते हैं. पहला है कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो पढ़ने से पहले we need to understand a term called net demand and time liabilities. For a bank has certain demand deposits. Bank has certain time deposits. I have opened savings account in Axis Bank. That is my demand deposit in Axis Bank. For bank, deposit is liability. So bank has certain demand liabilities and it has certain time liabilities. Demand liabilities and time liabilities. These are there with Axis Bank. Now, this is Axis Bank. It is also possible that SBI, ये क्यों होता है ये हम बैंकिंग में समझेंगे. SBI has also done certain deposits.
in Axis Bank. SBI has deposited some money in Axis Bank. ये क्यों होता है ये हम बैंकिंग में समझेंगे, बट अभी के लिए मान लो this people have deposited. This is what people have deposited. Even SBI has deposited some money in Axis Bank. So right now, if I look at the gross overall liabilities, gross liabilities of Axis Bank, it is some people's deposits and some interbank deposits. Interbank means between bank deposits. So total liabilities, gross liabilities of Axis Bank will be interbank deposits and people's deposits. For calculating cash reserve ratio or currency reserve ratio, CRR, which is part of RDR, for calculating CRR, we only want to see this, because this is who we are protecting. We are only protecting people against bank run. That is why there is RDR. So we will not see gross liabilities. We will see net liabilities or people's liabilities. Net liabilities will be gross liabilities minus interbank deposits. So we will calculate this net liability first. Net liabilities is also known as net demand liabilities and net time liabilities. There will be some time deposits, some demand deposits. So the term here used is NDTL, net demand and time liabilities. Is meaning of NDTL clear? Net demand and time liabilities. Money basically deposited by people as demand deposits and time deposits. Net demand and time liabilities. RBI says that you have to measure. RBI says you have to measure one part of RBI was controlling reserve deposit ratio. One part of reserve deposit ratio is cash reserve ratio. It has to be certain percentage of net demand and time liabilities. So first way for RBI to control money multiplier is to affect the reserve deposit ratio. This reserve deposit ratio consists of CRR and SLR. How is it calculated? Certain percentage of net demand and time liabilities. Cash reserve ratio, percentage of NDTL that banks are required to keep with RBI as cash. Banks have to keep this reserve as cash. Cash reserve ratio. Ratio of what? Ratio means certain part of, certain percentage of net demand and time liabilities. Banks are required to keep certain percentage of their deposits, which are their liabilities, certain percentage of their deposits as reserve with RBI in the form of cash, known as net demand and time liabilities. Net में net क्यों है यहाँ पे? Because public deposits are counted, interbank are not counted. Demand liabilities, demand deposit, savings account, current account. Time liabilities, fixed deposit, recurring deposit. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. So RBI says that bank has to maintain certain percentage of its NDTL. Let's say bank has 100 rupees as demand deposits. Bank has 200 rupees as time deposits. RBI says you must maintain 4% of this number. 4% of net demand and time liabilities as cash reserve with us. RDR के ही सिमिलर है, वहां पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था. 4% of 300. So you have to keep 12 rupees as cash reserve with us, which is keep us with RBI. So this is the first way of monetary policy control through affecting money multiplier. This will affect reserve deposit ratio. If it will affect reserve deposit ratio, it will definitely affect money multiplier. So bank has to keep certain percentage of net demand and time liabilities
with RBI. अब this is a regulatory requirement. ये एक regulation है. This is a regulatory requirement. This is not a bank's deposit in RBI. बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई अलग होता है, वो भी हम देखेंगे. दिस इज नॉट मनी बैंक इज डिपॉजिटिंग टू आरबीआई. याद करो बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई, वहां पर बैंक्स डिपॉजिट्स इन आरबीआई भी लिखा था. दिस इज नॉट बैंक्स डिपॉजिट टू आरबीआई. ये एक रेगुलेशन है. दिस इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. कीप दिस एज कैश इन आवर वॉल्ट. आप ऐसे मान लो कि दिस अमाउंट ऑफ कैश यू हैव टू कीप इन आरबीआई's वॉल्ट. क्यों है ये? ताकि बैंक रन ना हो. बैंक रन क्या होता है हम समझ चुके हैं. Since this is not a deposit, this is a regulatory requirement, this is not a deposit, RBI does not pay any interest on CRR. RBI इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता. RBI बस कहता है कि ये रिजर्व, ये कैश, आपके डिपॉजिट्स का टोटल 4% कैश हमारे वॉल्ट में रख दो. Where is this provision given? This provision is given in RBI Act 1934. Section 42 of RBI Act 1934. Cash reserves of scheduled banks to be kept with the bank. The bank here means RBI. Scheduled banks here are the commercial banks that we see. Scheduled bank क्या होता है हम कल देखेंगे. These are cash reserves of scheduled banks to be kept with the bank. The bank means RBI. Every bank included in the second schedule shall maintain with the bank, shall maintain with RBI an average daily balance, the amount of which shall not be less than certain percentage of demand and time liabilities. Okay. Ab, if RBI says that you have to keep more money as cash reserve ratio, this means you have to keep more money as reserve deposits. This means if this is increasing, money multiplier is decreasing. Money supply is equal to M into M naught. This is decreasing, so this is decreasing. So you increase CRR, you can decrease the money supply. High CRR means high CRR, less lendable money with the banks. They got deposits, they are supposed to lend these deposits out. Pehle RBI says you have 100 rupees in deposits, you keep 10 rupees with us. Now you can lend how much? You can lend 90. Second case, you got 100 rupees as deposits. RBI says maintain 50 as cash with us. Now how much you can lend? You can lend 50. So it will have an effect on money supply. How will it have an effect on money supply? Just remember this. RDR has two components, CRR, SLR. Is this clear? Same way you can reverse the situation also. Money multiplier is inversely proportional to reserve deposit ratio. Reserve deposit ratio is CRR and SLR. You can decrease CRR. When you decrease CRR, money multiplier will increase. Money multiplier will increase. MS is equal to M into M naught. Money multiplier will increase. Money supply will increase. है ना? December 6, 2024. Newspaper screenshot. RBI slashes cash reserve ratio to 4%. RBI reduced CRR. Earlier CRR was I think 4.25. From 4.25 they reduced it to 4%. What does it mean for banks? ये लाइन पढ़ते हैं. आपको रीड नहीं कर पा रहे होगे, मैं रीड करता हूँ. RBI Governor Shaktikanta Das sir said that CRR reduction will release 1.16 trillion into the banking system, providing additional liquidity and enabling banks to extend more loans. CRR has come down. RDR, that means, has come down.
money multiplier has gone up, banks will provide more loans. समझ आई बात? Is this clear? ठीक है. Second component of RDR is this is trend of CRR in India. ठीक है, CRR का ट्रेंड दिखाया हुआ है इंडिया में. नाउ इट्स एट 4%. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. इट्स ऑलवेज, पहले बहुत वेरिएशन होती थी. नाउ इट इज ऑलवेज बिटवीन 5 and 3%. फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस 10 years इट हैज बीन बिटवीन दिस रेंज ओनली, 5 and 3% इन इंडिया, है ना. अभी 4% है, हमने देख लिया न्यूज़पेपर. अब यहाँ लिखा है एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉट आरआरबीज, एनबीएफसीज. ये क्या होते हैं ये हम कल देखेंगे. अभी इस लाइन को इग्नोर करो, ये समझ आ जाएगी आपको. सेकंड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी मतलब मस्ट हैव बीन रिटन इन सम एक्ट और लॉ, मस्ट हैव बीन रिटन इन सम स्टैट्यूट. सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, so that banks can maintain liquidity, banks can maintain certain cash. In case of bank run, if everyone starts coming to the bank and demanding their cash, bank should have liquidity, statutory liquidity ratio. On CRR, this is cash reserve ratio. Does the bank make any money? Does the bank earn any money here? No. This is just bank's cash kept in RBI's vault. So in this case, bank does not earn any money. If you make CRR the only component, then banks will lose out on lot of money. है ना? Bank receives ₹100 as deposits. So bank receives deposit of ₹100. You say to bank, you have to maintain 10% as CRR. Now bank can loan ₹90. Now when bank can loan ₹90, bank will charge interest on this much. Bank has to pay interest on this much. And on this, bank earns no money. So whatever interest bank has to pay, let's say 4% here. Bank has to charge interest on this much. Whatever it can lend depends on whatever reserves it has to keep. So now RBI says that you are not earning money on this. Therefore, you are charging high interest here to recover your cost. So let me introduce another component of RDR. Reserves का मैं एक नया component लाता हूं, where you will be able to earn interest also, and there will be liquidity also. This new component is called statutory liquidity ratio. This is again calculated on proportion of net demand and time liabilities that banks have to maintain in the form of designated liquid assets. Certain assets you maintain in assets. If you will maintain this money as asset, it will earn some return. So you will have some earning. You will have some earning on this. But these assets are very liquid. Liquid means they are easily convertible to cash. In case there is a bank run, convert them to cash and give people back their money. Demonstrate your ability to repay the cash. This is the second component of RDR known as statutory liquidity ratio. Statutory must be given in some act. Which act we will see. अब क्वेश्चन आता है, which assets are these? कौन से assets हैं ये? These assets also guarantee certain returns for the bank, but which assets are these? You can read this list. अभी आपको शायद यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा होगा, but in your notes you will be able to read. You can maintain it as
कैश और गोल्ड, डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सारे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं. एनी बैलेंस मेंटेन्ड by scheduled bank with the reserve bank in excess of the balance maintained by it under section 42 of RBI Act. What was section 42 of RBI Act? It was CRR. So CRR आपको 4% रखना है, उससे ज्यादा अगर आप RBI के पास रख दो वो भी इसमें काउंट होता है. So certain designated assets, gold, government securities, cash, balance with RBI in excess of CRR. CRR इसमें काउंट नहीं होगा. CRR से ज्यादा, आपको मान लो 4 रुपीज CRR रखना था, आपने अगर 5 रुपीज रख दिया, this 1 extra rupee will be counted in SLR. This will earn return for you. So RBI has designated certain assets to be kept as statutory liquidity ratio. This will give the bank return also. तो ये दोनों का बैलेंस है. बैंक इज अर्निंग सम मनी ऑल्सो एंड इट इज अ टाइप ऑफ रिजर्व ऑल्सो. इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई, इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई विल बी सेम. सिंस मनी मल्टीप्लायर is inversely proportional to RDR. RDR has two things, CRR and SLR. जो CRR का इफेक्ट है वही SLR का इफेक्ट है. सेम इफेक्ट इज देयर, है ना. तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब इसका नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. विच स्टैट्यूट और लॉ इज इट गिवन इन? इट इज गिवन इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. क्या? विच सेक्शन? सेक्शन 24. ये रहा उसका स्क्रीनशॉट. क्या लिखा है आपने? एनी अ शेड्यूल्ड बैंक एक्सेट्रा विल मेंटेन सर्टेन एसेट्स. वही डिस्क्रिप्शन लिखिए. दिस इज लीगल लैंग्वेज, सो नो नीड टू रीड इन दैट मच डिटेल. वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन सच परसेंटेज not exceeding 40% of demand and time liabilities. Not exceeding 40%. That means SLR as a percentage, RBI cannot increase this beyond 40%. Maximum SLR in India can be 40%. ये लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. SLR maximum can be 40%. CRR पे ऐसी कोई लिमिट मेंशन्ड नहीं है. No such limit is mentioned. Who decides how much CRR, how much SLR? RBI decides. Currently, CRR is at 4%. SLR generally, although we will read this after the second monetary policy meeting of this year happens, when it happens in Feb. Generally, SLR is around 18 to 20%. Right now, I think it's close to 18%. 18 या 19% है अभी. So right now CRR is at 4%, SLR is at 18%. So banks receive rupees 100 as deposits, net demand and time liabilities, deposits of people only, not interbank deposits. 4 rupees they have to maintain as cash with RBI vault. They will not earn any money on this. This is due to the provisions of RBI Act, and theoretically there is no limit on this. Out of this 100 rupees, 18%, so 18 rupees they have to maintain in designated liquid assets. On this they will earn certain return. This is mentioned in Banking Regulation Act, and maximum limit here is 40%. CRR and SLR are clear. Both of them are part of RDR, so they will have an effect on money multiplier. Yes? All right. अब अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है ये बैंक है. बैंक के पास पहले कोई डिपॉजिट लेके आया,
बैंक ने उसमें से कुछ रिजर्व रखा, बैंक got some deposit, it kept some as reserve, then it gave certain loan. This is what we have seen. But will this process always happen in this sequence? Will this process always happen in the sequence that first bank will wait for deposits, then it will keep reserve, then it will loan out? There can be a situation where bank sees many people are demanding loans. There is huge demand of loans, but deposits are few. Will bank now say to them, wait, let me get more deposits, then I will give you loan? क्या बैंक ऐसा बोलेगा कि आप वेट करो, मैं पहले डिपॉजिट्स इकट्ठे करके लाता हूं, then I will give you loan? Will bank say this? No. What is bank facing here? What is the situation bank is facing here? Bank is facing a shortage of liquidity. It does not have cash directly to lend. It has a shortage of liquidity. अब या तो बैंक वेट कर ले, बैंक कैन वेट that more depositors will come, then I will get liquidity, then I will give loan. This is one option. Second option is bank can ask from some other bank, please give me some deposit for now, let me loan out, I will return this money to you. Third option, bank can ask for money from RBI. RBI, please give me money right now, I need to loan this money out, later I will return this money to you. Later I will return this money to you. This is also one option. So bank has a crisis of liquidity and someone is needed to adjust this liquidity. So bank needs something called the liquidity adjustment facility. Second situation can also happen. Bank has too many depositors. Many depositors have come. On each of these deposits, bank has to pay interest. Bank will earn money only when it is able to loan out this money. But very few people are asking for loans right now. If bank keeps money with itself, what will happen? Bank will lose money. Now bank has something called excess liquidity. Because ये तो होता रहेगा ना, it will not always happen in a sequence. Bank now has excess liquidity, too much liquidity, people are not asking for loans. So bank will say, RBI, I know you don't need it, but still, please borrow some money from me. Please take loan from me and give me certain payment so that I earn enough money at least to pay back depositors. Again, bank needs someone to adjust their liquidity, or they need a liquidity adjustment facility. Why is RBI doing this? Why is RBI agreeing to this? Because if this situation happens, that I am asking for loan, no bank is giving me loan, or bank is unable to pay back its depositors, trust in banking system is lost. It is RBI's job to maintain trust in banking system. So RBI will act as bankers bank. कल समझाऊंगा ये, bankers bank. RBI will act as bankers bank in this case, maintain the liquidity crisis. If there is a liquidity crisis, RBI will solve the liquidity crisis through a liquidity adjustment facility. In this case or in this case. ये बात समझ आई? Need of liquidity adjustment facility. Yes? चलो अब एक
यूरेका, जादू, मेंटोस, जो मोमेंट कहना है कह लो, इट इज गोइंग टू कम. आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज रेड बट नेवर अंडरस्टूड. इस सिचुएशन में देखते हैं. बैंक हैज अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी. सो बैंक सेज टू आरबीआई, प्लीज गिव मी सम मनी, please give me some money, I will return in future. Bank says to RBI, please give me some money, I will return in future. So bank says to RBI, give me certain money. Now RBI can effectively, RBI is giving a loan. RBI is effectively giving a loan to bank. Bank is saying, I will return in future. So RBI says, if anyone has to give loan, if I will give loan to you, if bank will give loan to you, they will ask for certain security or collateral. You must have heard this term, collateral. Bank will ask for certain collateral. Here RBI is giving loan, so it will ask for certain collateral. It will say to this bank, as collateral, give me some government securities that you own. Give me some government securities that you own as collateral. When you have solved your liquidity crisis, when you get more depositors, आज depositors कम हैं, later you will get more depositors. When you have solved your liquidity crisis, return my money to me with certain interest, and I will return back your government securities. This is your collateral. Fair enough? Now this transaction does not happen in the form of collateral. हो यही रहा है, इसका नाम थोड़ा अलग रखता है RBI. What does RBI say? RBI says, you need money now. पहले बताओ, ये समझ आया यहां पे क्या हो रहा है? इतना समझ आया ना? RBI खुद एक बैंक है, तो RBI को collateral चाहिए if it has to give any loan. Is the process clear? ठीक है, but RBI doesn't do this transaction like this. हो यही रहा है, but RBI does this transaction in a certain different way. RBI says, and you will love this moment, I hope you do. RBI says, I will purchase your government securities right now. I will purchase your government securities right now. I will purchase your government securities right now, and I will give you certain money. If I have purchased your government securities, you must then pay me back my money. I want the money back. So you promise me that you will repurchase your government securities at a higher rate. Let's say I have purchased your government securities today for rupees 100. I have purchased government security, given you rupees 100. 15 days later, you must repurchase your government securities for, let's say, rupees 110. 15 days later, you must repurchase your government securities and pay me rupees 110. So interest here becomes 10 rupees effectively. 10 rupees is the interest here. RBI says to bank, if you have a liquidity crisis, I will give you a liquidity adjustment facility by purchasing your government securities and giving you money. But you have a repurchase obligation. You have an obligation to repurchase after certain time at a higher rate. You must pay me a repo rate. First part of LAF, repo rate. कुछ समझ आया?
चलो, थैंक यू फॉर दोस नाइस कमेंट्स. आई होप अब आपको ये रटना ना पड़े, है ना. सबने रट रखा है भाई repo rate. Everyone has mugged up, including the person standing in front of you. I am not different from you. I had also mugged up repo rate when I was preparing. But then you read deeper and you understand that everything has some logic. Second case. Bank has excess liquidity. RBI and bank now will get into another relationship. Bank will say to RBI, please take my money and pay me certain rate of interest. So now RBI will give government securities. Later, bank will receive back money and interest, and there will be return of government securities. This is exactly reverse of the transaction we have just seen. This is exactly reverse of this transaction known as reverse repo rate. ये भी क्लियर हो गया. This is also fair. ठीक है. Reverse of the above transaction. अब let's say third situation. You have a liquidity crunch. Liquidity crunch situation क्या थी बैंक के लिए? Liquidity crunch situation is bank has many people who are willing to take loans, very few people who are willing to give deposits. Bank also has no government securities left. Bank has no government securities left. Till it had government securities, this option was there. Repo rate option was there. But you have no government securities left. Now what do? RBI says, I'll give you one last option. You have kept certain money in SLR. In SLR, you have kept certain money as GSEC. Certain money is standing in GSEC. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने कुछ SLR रख रखा है. यू हैव नो अदर GSECs. आपके पास और कोई खाली GSEC नहीं है, बस यही वाले बचे हैं. और यू हैव अदर एसेट्स हियर. RBI says, RBI says you can take some loan from this also. Ideally, you are not allowed to, but this is an emergency situation. You can take some loan from this. Your SLR requirement is right now 19%. Let's say I will reduce it by 1, make it 18%. Whatever I reduce it by, ये जो बचेंगे, यहां जो नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगे. Sorry, just give me 1 minute. Really sorry. Really sorry about that. RBI says I will reduce your SLR by 1. आपका अभी SLR 19% था, मैं इसे कम कर देता हूं by 1. I will give you certain margin by 1. I will reduce. जो ये रिडक्शन हुआ, अब you can use this for the
same repo transaction. But since you have taken this government security out of your SLR quota, आपने SLR के कोटा में से गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाली है, आपके पास खुद की नहीं थी. This is not your own government security. This was ideally meant to be reserve. You have taken something out of your reserve. It is a complete emergency, we understand. We will let you do this. We will give you certain margin here, but we will charge you a higher rate. This facility is known as marginal standing facility. Third part of liquidity adjustment facility. You have a liquidity crunch and you have no spare government securities left. Take some government securities from your SLR quota by reducing it by one marginal. Reduce it by one. Reduce your, right now you had 19, right now you have 19 rupees worth government securities. We will allow you to maintain 18 rupees worth government securities. You will get one extra government security. From this you can now do the repo transaction and borrow certain money, but we will charge you more interest, more than repo, since you are taking it out of SLR, known as marginal standing facility, and the rate here is more than repo rate, known as MSF. Clear हुआ? ठीक है. अब effectively RBI is giving money to banks and receiving repo rate. When RBI is giving money to banks and receiving repo rate, RBI is giving money to banks and receiving repo rate. In this case, first case, liquidity crunch, RBI gives money to banks, later it receives certain interest known as repo rate. First case. Second case, banks park certain money in RBI and receive interest. Banks give money to RBI, receive interest known as reverse repo rate. So banks park certain money. You can remember this as when you park your car, you do it in the reverse gear. So when banks park certain money, when they have excess liquidity, RBI pays them reverse repo rate. In the situation of crisis, banks dip into their SLR quota and from this SLR quota give G-Secs to RBI. RBI gives them money and later it will receive MSF rate. अब पहले आप बताओ, RBI has to receive repo rate, RBI has to pay reverse repo rate. अगर आप गवर्नर होते RBI के तो आप क्या कहते? आप RBI गवर्नर होते तो आप भी यही कहते that I will receive more money than I will pay. I will receive more money. When I loan out money, this is technically a loan. When I loan out money, I will receive more money than I pay. So repo more than reverse repo. And then you would say that if somebody is getting a loan from SLR quota, they are doing something which is technically not allowed. I will levy some penalty on them. In this case, when I am loaning out, in this case, I will charge even more interest than repo rate. Because that was in case of spare government securities. Now you are dipping into your SLR quota.
Now when you are dipping into your SLR quota, I will charge even more interest rate. अब ये भी मत रटना. MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अब पढ़ लेते हैं. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सिचुएशन 1, लिक्विडिटी क्रंच, एक्सेस लिक्विडिटी, केस ऑफ रीपर्चेज ऑप्शन और रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रिपो रेट. ये अब आपने पढ़ना है, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है. रिवर्स रिपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यू रिड्यूस बाय 1%. जो एसएलआर की रिक्वायरमेंट है आज वो 18% है, आप 1% कम करोगे एसएलआर की रिक्वायरमेंट और आप उस पर बोरो कर लो. 1 इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड मार्जिनल. सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ये भी हो गया. इतने क्वेश्चन आते हैं इससे, दीज 3 थिंग्स. ठीक है, ये हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म हो गए. So we have understood MSF will be higher than repo rate, will be higher than reverse repo rate. यहां पे आज की क्लास खत्म करते हैं. प्लीज इसको रिवाइज करके आना. कल मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स और कल बैंकिंग स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, आई होप यू हैड अ गुड टाइम. आई होप आपको समझ आया हो. ठीक है, कल मिलते हैं. बाय, गुड इवनिंग. वीडियो अपलोड हो गई है, फॉर्म भर लो प्लीज. वॉच द वीडियो एंड fill the form.